Honorable Speaker, sir, I want to, with your permission, draw the attention of the honorable member to the fact that it was precisely because the capacity to pay for families which are termed as BPL or below poverty line that the Ujjwala scheme was introduced. The Ujjwala scheme, sir, when it was introduced, initially it had 8 crore connections, and these 8 crore connections were provided a good 7 or 8 months before the time. We reissued another 1 crore 60 lakh cylinders under the Ujjwala scheme, where the lady member of the household is presented free of cost a cooking top and a cylinder. Now, during the course of the pandemic, sir, when economic activity had come to a grinding halt at one stage and then it was slow, and the families who are in the below poverty line categorization were the most severely affected, the government gave 3 cylinders free of cost to those BPL families. Sir, insofar as prices are concerned, I should like to submit through you, sir, to the House that we import 60% or thereabouts, perhaps even more sometimes, of our requirements. We have to import them. The import price, sir, is linked to what is called the Saudi CP or the Saudi contract price. And the interesting thing is that the Saudi contract price during the last 2 years or so, if we have to use this as a reference period, sir, it has gone up from 250 per metric tons per $250 per metric ton to something like $900 per metric ton. Today also I think it is around $751 per metric ton. Now, if your import bill is determined by the international price, then it is very interesting to analyze what the government did. Because the government is sensitive to the requirements, sir, of the consuming population, particularly, as the honorable member says, to the most vulnerable, we did not allow the cost of domestic LPG to increase. Saudi contract price, sir, went up 333%, and yet the price increased was very small for the domestic thing. In May 2022, precisely as the honorable member states, we introduced a 200... Sir, I would like to complete this. आपको इजाजत नहीं दी, आप इनका जवाब मत दिया करें। एक बात सुन लें, प्लीज बैठें, प्लीज बैठे मंत्री। कोई भी माननीय मंत्रीगण नीचे बैठे कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो आप उसका जवाब मत दिया करें। ये लाइन आपको कही दे दिया, लेकिन आप उन पर बहस करना चाहते हैं। उनसे तो सर बहस करना, मैं कौन होता हूं बहस से, इतने विद्वान हैं, लेकिन आप चर्चा मत करो, तो मैं कौन होता हूं? मैं जिनको अलाउ करूं उनका जवाब दो आप। सर, आई वांट टू कंक्लूड दिस दैट at the end of the day, sir, at a time when the Honorable Prime Minister was providing 3 free meals, dry rations, to a very large segment of our population, even at that stage, we did not allow the price of domestic LPG to go up. Now, at the end of the day, that 200 rupees subsidy, what is a subsidy? It is taxpayers' money. And as the Honorable Member says, the ones who are most vulnerable, we are always ready. Left to this House and the Honorable Prime Minister, it would be ideal if the international or the Saudi contract price could come down from 750 further down. It would enable domestic LPG to be sold at even more economical rates. So I wish to submit this in response to what the Honorable MP has said, and I always stand ready to be able to, I would also be able to provide further details on this. Thank you, sir. Sir, I was only trying to reiterate that 33% of a family's income goes towards gas is probably not acceptable, and how it can be alleviated. My next question is, what is the status of your investment in Mozambique, sir, where
there is a huge project which is taken by Total, and there are some unrests over there, and if that happens, probably gas can be made a lot more cheaper in India. So I would like to know what is the status of the project which is happening in Mozambique. Sir, I want to thank the honourable member. It is my understanding that at least the context that I have set out and the international situation. Sir, as part of the many initiatives which have been taken during the last several years, import of gas, acquisition of assets outside, increasing domestic production of gas. Sir, I'd like to inform the honourable member through you, sir, that last year our domestic production went up by 18%. This year also it's going up 18%. But for an economy which is thriving, where the rate of growth is 6.5% and 7%, where our growth rate, sir, is 3 times the global average. So we have a situation, the more demand for energy is rising on a daily basis. Insofar as the investment in Mozambique is concerned, sir, the honourable member has referred to unrest. Sir, there is an issue there. We are in partnership with an international group of companies. He mentioned one of them. And there are local conditions which are of, I would say, I would perhaps call it unrest is too mild a term, but there are issues of dealing with a form of insurgency there. We are in touch with these people, and the project is under what is called force majeure. And the $6 billion investment by Indian companies, we are very confident that due to the negotiations we are having both with government parties and the others, people taking on responsibility, we will find a way and to navigate through this problem so that gas not only from Mozambique but from several other sources where we are getting gas from, and at the end of the day the international price is determined by a variety of factors. And you know, one of the analysis I read, sir, was in a few years' time this will be all a thing of the past because there will be so much gas available. But we have to navigate the next 2 or 3 years through the kind of global situation as it exists today and as it is evolving. Thank you, sir. Srimati Supriya Sule. Sir, I would just like to ask the Honourable Minister, I appreciate you saying that for Atmanirbhar Bharat in 9 years you've managed to increase, but you're still at 60%. So from where did you start to bring it to this 20%, which you said you increased it by 16 and 16? So the domestic, if you could clarify. And my second limit, it's a question is, in the international process, what you mentioned, we've had a slight conflict with our various relationships because of the amount of oil and gas that we're getting from Russia. So that was a big benefit, and that's what came in the media. So why is that benefit of the oil cost not given to the consumer? So if you had made that agreement with Russia, which has come in the newspapers, and we have strained our other relations worldwide, including with America, so how does this balance work, and why is the common man not getting the cylinder cheaper if you think you've done such a good intervention? Honourable Speaker, sir, I think I should start by saying that precisely because the government wants to insulate our domestic consumer from the volatility which results on account of the international prices, we took a number of steps. First of all, if you look at the scale, in 2014, sir, we had 14 crore connections, gas connections. That has risen to 31 crore or more than that. Today, apart from the 31 crore connections, several other things have happened. Our gas pipeline, which was at something like 14,000 kilometers in 2014, we are taking it to 33,500 kilometers. That is a target. We are already at 23,500 kilometers. Our domestic production, I mentioned, has gone up 18% last year and 18% this year. But we still have to, after that increase in production, import 60%. Now the issue, sir, here is oil marketing companies have not increased the price. They took a massive loss, huge losses, on account of the fact that they were not able to pass through onto the consumer the international price at which they were importing. So they had 28,000 crores lost, for which the government
compensated them for 2,000 crores. Equally, insofar as petrol and diesel prices are concerned, sir, on two occasions. Thank you for giving me this opportunity. In November 21 and माननीय again मंत्री जी, in मैंने May गीता 22. विश्वनाथन का अनाउंस कर दिया, आप बैठ जाइए। गीता विश्वनाथन जी, तैयारी अच्छा है सर, Thank you, sir. I convey my thanks to Honorable Minister for more and more connections given to under Ujjwala scheme. Sir, thank you. But I would like to know from the Honorable Minister, it is estimated that rural household with LPG connections are spending 6.7% of their income on fuel, which was 40% than the amount they were paying. ऑनरेबल मेंबर, शॉर्ट में Shifting to LPG, thereby forcing them to make unfair choices about their basic standards of life. I would like to know from the Honorable माननीय Minister. मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, अपना क्वेश्चन शॉर्ट में पूछो, नहीं तो जितना लंबा क्वेश्चन पूछोगे माननीय मंत्री जी उतना डबल जवाब देंगे। I must seek, sir, I'm happy to provide a shorter answer provided to know what the question is. Sir, insofar as rural household spending is concerned, sir, I again reiterate, the government has taken a number of steps and very effective to insulate the consumer by bringing the price of petrol and diesel. They have not gone up since 6th April last year. Throughout the world, the increases are astronomical. In India, petrol and diesel prices in the OMC pumps have not gone up since 6th April of 2022. I think this point, sir, needs to be appreciated. Equally for gas, we have not allowed the increase in the Saudi contract price to be reflected in the domestic price. Sir, it is so easy to get excited and talk about things. The ground situation is India stands out as a shining example where the consumer has not had to face the increase in the global volatility and price increases. As I said, on 6th April 2022, petrol and diesel prices have not gone up in India, whereas they have shot up. You only need to look at what is happening in our neighboring countries. In one country, after 8 o'clock, you can't switch on the electricity because there is no energy. In another country, equally for gas, if the international price comes down, we are still willing, and if we need to look at the issues, equally, let me say, those who are recipients of or beneficiaries of Ujjwala, their consumption has gone up. I occasionally hear statements saying people don't take benefits. Average under Ujjwala, sir, is 3.68 cylinders in a thing. So think it has gone up very fast. And even those who earlier were not taking refills are now taking more and more refills. क्वेश्चन नंबर 102, श्री मनोज तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्पादित खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्पादित खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले 3 वर्षों में खादी क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, खादी विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जो खादी में सुधार किया गया है, हमारा अंडर खादी डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम के अंतर्गत खादी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 2013 में खादी मार्क की शुरुआत की गई थी। खादी मार्क न केवल खादी उत्पादों की वास्तविकता की गारंटी देता है, बल्कि खादी को ऐसे ब्रांड के रूप में बढ़ावा देता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संबंधी मूल्यों को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, खादी विकास योजना के विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक के अंतर्गत उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, कारीगरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने, मानव परिश्रम को कम करने, बाजार की मांग के अनुसार नए उत्पादों को विकसित करने तथा स्थानीय कच्चे माल का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए
विभिन्न अनुसंधान विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है और मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मगर मेरा एक पूरा प्रश्न है, जैसे हमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच और विजन जो खादी के लिए है उस पर बहुत गर्व है अध्यक्ष जी, और हमें पता है कि इसी के कारण आज युवाओं में खादी फैशन ट्रेंड कर रहा है। दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें डेटा में मिला है कि इस समय निफ्ट के समान ही खादी भी फैशन वर्ल्ड की पसंद बन रही है अध्यक्ष जी, और खादी क्षेत्र के कामगारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित रहते हैं, जैसे युवाओं में खादी ट्रेंड हो वैसे ही। और मुझे एक अच्छी बात और आई है कि खादी ग्रामोद्योग केंद्र के जो अध्यक्ष हैं वो गांव-गांव प्रवास भी कर रहे हैं। पर मेरा प्रश्न है कि मंत्री जी बताएंगे कि जैसा वर्षों से जो गरीब कामगार हैं जो इस खादी को बनाने में सूत काटते हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, क्या उनका वेजेस बढ़ाने का कोई प्रावधान है, कोई योजना है, उसमें जानकारी चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से निफ्ट की जो बात की है उसके लिए गांधीनगर, बेंगलोर, कोलकाता और शिलांग में हब बनाए गए हैं, जिससे उनके कामों को ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके और नई नई फैब्रिक का उत्पादन किया जा सके। घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय बाजार उच्च स्तरीय फैब्रिक कपड़ों की गुणवत्ता मानकों को प्रसार किया जा सके। विशेष रूप से हमारे जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि हमारे जो कारीगर हैं उनकी गुणवत्ता के लिए, उनकी सुधार के लिए क्या कुछ पैसा बढ़ाया जा रहा है। विशेष रूप से जब वो कर्तन करते हैं तो उन्हें 7.5 रुपए दिया जाता है एक कर्तन पर, लेकिन इसे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, इसमें कुछ न कुछ पैसा बढ़ाया जाएगा। निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय, अध्यक्ष जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण खादी आज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर रहा है। मेरा बड़ा साधारण सा सवाल है सर कि जो केवीआईसी है उसके जो बड़े बड़े शोरूम हैं वो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल, गोवा, और खादी ये रूरल एरियाज में रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। और जो 298 क्लस्टर हैं खादी के, उसमें 250 क्लस्टर वैसे हैं जो कि इसी वेस्टर्न इंडिया में मौजूद है सर। ईस्टर्न इंडिया इससे अछूता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से साधारण सा प्रश्न है कि वर्कसेट प्रोग्राम, मिशन सोलर चरखा, स्फूर्ति, वर्किंग कैपिटल, हनी मिशन और जो कंपटीशन आ रहा है दुनिया में खादी को प्राइवेट सेक्टर से जो आ रहा है या हैंडलूम सेक्टर से अलग हटकर जो मशीन मेड कपड़े पर आ रहा है, उसके बारे में ईस्टर्न इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो समस्याएं हैं जहां खादी की प्रेजेंस कम है, उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। खादी का विस्तार के बारे में माननीय पंतप्रधान जी का इस विभाग पर अच्छे तरह से ध्यान है। खादी का विस्तार होने के लिए काफी तरह की योजना है, आज तक शुरू हो गई है, उसका संदर्भ अभी अभी राज्य मंत्री ने दिया है। क्लस्टर के बारे में जो राज्य में जिस इलाके में क्लस्टर अभी तक पहुंचे नहीं है वहां क्लस्टर देने के प्रयोजन सरकार कर रही है और रोजगार भी बढ़ाने का कोशिश है। खादी से रोजगार बढ़ाने की कोशिश करने के लिए ये प्रावधान किया जाता है और खादी में अलग अलग योजना, गुणवत्ता में सुधार, चरखों में जो सुधार, इसमें कौशल्य विकास के माध्यम से आधुनिक टेक्नोलॉजी के वजह से ये खादी में सुधारने का काम चालू है और ज्यादा रोजगार निर्माण करके उत्पादन खादी के कामगार को बढ़ाने की कोशिश चली है। श्रीमती कनिमोजी। Sir, we know that the Khadi craftspeople and the weavers have been really affected during COVID.
But in the minister's reply, I see that the financial assistance has been reduced drastically from 31.28 crores to 7.39 crores. Why is it you supposed to be helping them and aiding them? You've been reducing that, and the Center of Excellence for Khadi has been set up in NIFs in Ahmedabad, Bangalore, Calcutta and Shillong. Why has Chennai been left out? Thank you. Very good question. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चेन्नई को छोड़ा नहीं गया है। जहाँ रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, वहाँ फंड वहाँ भेजा गया, उसकी नियुक्ति करते गई। 19-20 में 31 करोड़ दिए गए थे, 20-21 में 12 करोड़ दिए गए थे, 21-22 में 7 करोड़ दिए गए। एक जो अमाउंट कम होती गई है, वो उसी समय बैंक के माध्यम से जो लोन मिले थे 150 करोड़, आज भी 145 करोड़ इस डिपार्टमेंट के बाद बैलेंस है। वो जहां भी आवश्यकता है खादी के लिए, खादी की टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए, खादी के चरखा चलाने वाले को वहां कुछ ही चीज की आवश्यकता हो तो 145 करोड़ आज भी डिपार्टमेंट के पास है। श्री बी मेहताब जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। खादी एक इमोशनल कनेक्शन हमारे सबके साथ, सब परिवार के साथ है। हैंडस्पन खादी, यही उसकी खूबियत है। और इसलिए मैं जानना चाहता हूं, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा मार्केटिंग। प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा जोर हम दे रहे हैं या मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं? आपका उत्तर आएगा, हम दोनों पर दे रहे हैं। पर अगर आप विस्तार से जाएं, प्रोडक्शन इस कई सालों में कहां बढ़ी है और किस चीजों पर बढ़ी है? खादी was supposed to be a poor men's dress और poor women's dress, पर हम इसको मिडिल क्लास और कंज्यूमर दुकान के जरिए इसको बिकने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है मार्केटिंग के हिसाब से और प्रोडक्शन के हिसाब से? जैसे निशिकांत जी ने कहा और कानीमोड़ी जी ने अभी कहा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट ना करें, पर रीजन वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही ढंग से हो तो ये ज्यादा महत्व रखेगा। इस सिलसिले में मैं सरकार की मनीषा जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, खादी तो आम आदमी या आम कामगार गरीबों के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए एक खादी के माध्यम से काम किया जाता है। खादी में सुधार हो, ज्यादा से ज्यादा कामगार को रोजगार मिले, अच्छा उत्पन्न मिले, इसमें कोशिश में सरकार काम कर रहा है। जहां आवश्यकता है इसमें काफी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी हम सुधार कर रहे हैं। और जो बेस है खादी का, खादी शुरू किया जिस कारण से वो बेस शुरू रहे, क्वालिटी वाइज खादी अच्छा निर्माण हुए और मार्केटिंग इसलिए कर रहे हैं कि उसे मार्केटिंग करेंगे। जो कामगार खादी बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, वो मार्केटिंग करने के बाद ही उनको पैसा आ जाएगा। तो हमारा ध्यान खादी में रोजगार देना है, कामगारों को पर कैपिटा इनकम में किस तरह से सुधार हो, यह हमारा सरकार का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 103 थी मोहन भाई कुंडारिया। माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। प्रधानमंत्री और मंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूं। खास करके राजकोट स्मार्ट सिटी में 71 प्रोजेक्ट परियोजना में स्टार्ट किया था, उसमें से 33 परियोजना पूर्ण हुई है, 38 परियोजना का काम चालू है। सरकार की 2017 से 2023
तक 5 वर्ष की परियोजना था, वो जो प्रोजेक्ट 38 चालू से उसमें समय मर्यादा बढ़ाने के लिए सरकार कोई सोच रहा है क्या? Honorable Speaker, sir, I want to thank the honorable member for raising this question on the smart city project in Rajkot. और जैसे माननीय सांसद ने कहा, यहाँ पे राजकोट में टोटल 71 प्रोजेक्ट हैं 2161 करोड़ के कॉस्ट के लिए। इसमें 33 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं 803 करोड़ के, और 38 प्रोजेक्ट जो हैं 1355 करीब करोड़ के, विच इज वर्क इन प्रोग्रेस। सर, अभी ये जो योजना है इसमें फंडिंग जो है जून 2023 तक की हमने प्रोविजनिंग की है, और जिस तरीके से राजकोट में काम हो रहा है, my assessment, sir, is that Rajkot is one of the more successful amongst the successful smart city projects. और हमारा जो सिस्टम है, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, तो हम अगली सेगमेंट के लिए भी प्रोविजनिंग और जो हुई है उसमें पैसा रिलीज कर देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब से लेके जून तक जो भी हमारे पास समय है उसमें हम इनकरेज करेंगे राजकोट की स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल को, और जो भी ओवरसाइट हो रही है, हम स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें ओवरसाइट करती है। जो 6 उनकी स्मार्ट सिटीज हैं गुजरात में, हम केंद्र सरकार से भी करते हैं, और हमें विश्वास है कि काम समय से पूरा हो जाएगा, और इसके लिए हम उनको इनकरेज करते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में स्मार्ट सिटी में शहर को चयन किया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में गुजरात में नया कितना शहर में वो प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा? देखिए सर, केंद्रीय सरकार की तरफ से जो फंडिंग है स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स के लिए, वो है टोटल हमारी तरफ से 500 करोड़, और 500 करोड़ उसमें से राज्य सरकार की तरफ से आना है, और बाकी जो पैसा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और बाकी सर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड्स रेडी टू कोऑपरेट इन फॉर ऑल दी 100 स्मार्ट सिटीज। सब जगह इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन गए हैं। अगर कुछ और भी जरूरत हो, पर अभी तक जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स की फंडिंग है सर, वो अभी सिर्फ इन 100 के लिए है, और अभी अगर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से कुछ सिटीज को स्मार्टिफाई करना चाहते हैं, जैसे कई सरकारों ने किया है, राज्य सरकारों ने, तो हम उसको इनकरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 भी क्लब किया जाता है। माननीय मंत्री जी 112 क्लब कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन है। श्री अर्जुन मीणा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 112 बोलो। क्वेश्चन नंबर 112। माननीय मंत्री जी। सर, a statement is laid on the table of the house. माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तृत से देश में 100 स्मार्ट सिटी के बारे में विस्तृत से उत्तर दिया है। मैं राजस्थान के उदयपुर स्मार्ट सिटी के बारे में लगभग 127 परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, और 1371 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 9 परियोजना का कार्य चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या मंत्री जी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आने जाने वाले लोगों के लिए जाम लगता है बार बार, उसको निजात पाने के लिए उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से कोट चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने की मंशा रखते हैं क्या? धन्यवाद। कोई मंत्री जी के पास कोई नक्शा थोड़ी भाई एक रोड का बता देंगे भाई। आप तो जनरल क्वेश्चन पूछो ना, इस रोड से। ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं उदयपुर की जो स्मार्ट सिटी है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। नेशनल रैंकिंग में आज वो 5वें स्थान पे है, एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। पर मैं, with due modesty, I also want to say, sir, that Udaipur is one of the most beautiful cities. Or even before the smart city project commenced in June 2015, Udaipur already had a very heavy
footfall of tourists visiting the many beautiful locations there. And I am personally, I've greatly benefited from these visits. Sir, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स टेकअप किए जाते हैं वो स्टेट की तरफ से आते हैं, और इस समय मैं समझता हूं कि जो उदयपुर में आप देखिए तो 127 प्रोजेक्ट्स वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, 1372 crores. वर्क ऑर्डर स्टेज पे 9 प्रोजेक्ट्स हैं, 257 crores. Since only a few months are left for the projects to be completed, मैं समझता हूं इस समय कोई नया प्रोजेक्ट उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए स्कोप कम है. बट राज्य सरकार के एफर्ट से, केंद्रीय सरकार से एफर्ट से, अगर जो माननीय द ऑनरेबल मेंबर मेंशन traffic congestion and he had asked for an elevated roadway, these are all projects that can be considered by the concerned agency under different provisions which are available, sir. राज्य सरकार आपसे सलाह नहीं लेती, वो तो खुद ही चेंज कर देती है. वो नगर निगम अपना है, इसलिए ठीक हो रहा है काम. शशि थरूर जी. Much, Mr. Speaker. Speaker, I was looking at the Minister's response, and I must say I'm concerned about the very uneven pace of implementation of the Smart Cities mission, given that there are only about 4 months left for the ultimate deadline of June 2023 for the 100 cities, sir. If I take one example, or one pair of cities that were both selected in September of 2016, you take Varanasi on the one hand, and you take Atal Nagar in Chhattisgarh. Varanasi, pretty much every program has been done, 98 out of 104 according to your website, whereas Atal Nagar, in fact, only 3.8% of the projects, that is 2 out of 53, are completed. So my question to the Honourable Minister is, first, how do you explain these discrepancies and the unevenness in the implementation of the smart city projects? Prime Minister. Secondly, how do you account for the delays? If there are some cities where there are major delays, there must be some common factors that your ministry has studied to understand why these projects are not getting complete. And finally, sir, how does Thiruvananthapuram fare in this league table of uneven implementation? Thank you, Mr. You should be the Prime Minister. सर, आप वरिष्ठ सदस्य, एजुकेशन का काम तो राज्य सरकार करेगी ना, तो सुपरविजन करेंगे. Sir, I have a very simple question. The honourable member knows, and I know the rest of us know, that when you read facts and figures and statistics, you have to be a little careful. Sometimes the time for a project under construction to be completed is very little. But till the completion certificate comes, it will be shown as work under progress. Sir, almost all 100 cities are doing fairly well. Some, due to the COVID period, there was a slowdown, or there were local factors, जैसे आपने सर हिंट किया from the chair, कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनका भी इसमें रोल होता है. सो अभी जो केरला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूं इस पे हमें honourable member and I can have a special seminar along with other members to discuss it, but I don't think that it would be appropriate for me to share my assessment on why some things don't happen in state governments. It may not be in the spirit of the discussion we are having. There are also other factors, common factors, where oversight is effective, where the advisory committee for the projects are meeting. अब एक प्रश्न उठा था सर राजकोट की स्मार्ट सिटी के बारे. मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये बताने में कि उसकी जो एडवाइजरी कमेटी है, जिसमें ऑनरेबल एमपी इज ऑल्सो अ मेंबर, उनकी 16 मीटिंग्स हो चुकी हैं. हर एक क्वार्टर में उनकी मीटिंग होती है. तो जहां पे दी लोकल एमपीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टेक दिस थिंग, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस. जहां तक ये अनइवन प्रोग्रेस है, आई वुड रिक्वेस्ट कि जब हमारी आप वेबसाइट भी देखें तो उसमें वेबसाइट में भी देखें तो वेबसाइट भी देखें, वाराणसी वॉज डिक्लेयर्ड ए स्मार्ट सिटी इन September 2016. Atal Nagar came in round 3 much later. So to compare something which is in round 1 to something which is in round 3 also requires what I call, and if I may have your permission, it's what is called a statistical hop, step and jump, which I think educated members and analysts should try and avoid indulging in.
अधीर रंजन जी, मेरा सवाल दूसरे सवाल पे है। मुझे दूसरे सवाल पे पूछना है सर। पूछे ना। नहीं, वो मंत्री की नहीं। तो आप उठे क्यों थे? आपको अगर प्रश्न नहीं पूछना था तो आप उठे क्यों थे? सर इसलिए उठा था कि शशि थरूर जी जो सवाल पूछा था सर, ये डिस्क्रिपेंसी के बारे में उनका सवाल स्पष्ट था कि बेनारस वो विद्वान है, आप उनका सब। लेकिन our concerned minister is a well loquacious minister in the house. He knows how to deflect, and how to. क्वेश्चन नंबर स्मार्ट सिटी तो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 100 को अलाउ कर दूंगा क्या? 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्मार्ट सिटी तो 100 को अलाउ कर दूंगा क्या? 104 श्री बीबी पाटिल। सर जस्ट स्मॉल क्वेश्चन, जवाब पटल पर रखा है। श्री दयानिधि मारन। Thank you, Speaker, sir. Sir, our minister is a very dynamic minister, and he has all the data in his hand. I just find fingertips. I just want to ask you, sir, you're doing this pilot project about two parts. The first part is this: how you ensure that when you lay these fibers, you don't expand the roads again, so that these fibers don't get affected? And is this fibers which are laying for along with the national highways, will it be exclusively for the national highway program, or will it also be leased out to other private operators like internet ISPs and other service providers? So part B, since Bengaluru has been mentioned, and we have been making a severe request for you. Sir, recently I had an opportunity to travel to Ranipet from Chennai. The roads are pathetic. So all the land has been given by the state government. The expansion work is all land sector. But your contractors have gone to the court. For the last 4 years, sir, the Chennai-Bengaluru highway is in a mess. It takes nearly more to cross, say 100 kilometers. It takes 4.5 hours. It's in a very pathetic state. So I know you will come and tell me that because all the contractors have got to court. Sir, what is this process? How do you overcome it? So why should a common man, or why should the people of Tamil Nadu suffer because your contractors or your people are not able to ensure that these contractors fall in line? So please ensure that these projects are completed on time. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, basically the problem related with the Chennai-Bangalore Express Highway, I just got opportunity to visit on the site. The problem is not with my department. Here I need your cooperation for that. Aggregate is not available. Sometimes the permission given for 3 months, after 3 months again to get new permission is a difficult task. Then there is no permission for mining. Also there is a big problem. Then how we can make the roads? The problem is land acquisition is a problem. Environment, forest clearance is not there. Still, Bangalore side express highway is really, the progress is very good. But still as Tamil Nadu, we don't have land, we don't have clearances, then how the contractor are going to work for that? That is to be a big problem. I am really thankful for you that I need your cooperation, particularly I want to work for Tamil Nadu. We have a lot of projects. Many times I explain it to the Honorable Member of Parliament, and many times I have given my representation to Honorable Chief Minister also, that as far as without land, without environment clearance, how it is possible for us to construct the roads. So exactly, I am with you. We want to complete this Chennai-Bangalore Express Highway, and actually my target is to complete this project up to end of this December this year. This will take from Chennai to Bangalore 2 hours. And actually at time I visited Bangalore to Mysore. The work is completed. In next month, Prime Minister is, we are talking with the PMO, taking date for that, and it will be only 1 hour from Bangalore to Mysore. I understand the importance of the road, and 100% we will try our level best to clear it, but also your cooperation will be there. It will be a great thing for me to complete the project. Regarding this Delhi-Mumbai Express Highway, regarding this is a Greenfield Express Highway, yes, I am telling you that. We are working on that. About our mandate is only to construction of road. But now in many times, petroleum minister, they need land acquisition for making of gas pipeline, making of petrol and diesel, other thing they need. They are making lot of big project.
Then there is some of the optic fiber, the other department are doing lot of work. The idea is experimentally for a pilot project, we are doing two projects. One is Delhi-Mumbai Expressway, Greenfield Expressway, and the other is Hyderabad-Bangalore Industrial Corridor, that is Brownfield Expressway. We have already appointed the agency Andhra Pradesh Urban Infrastructure Asset Management Limited, appointed by our NHLML, that is the organization in our NHI. And now the planning is that the cost is very high because it comes in crores, 6 to 7 crore rupees per kilometer. The idea is we can make a duct where we can make a petroleum pipeline, we can make IT fiber line, also there will be pipe, PVC pipe or the LDP pipe or HDP pipe for using for optic fiber cable. Then we can use electric cable also, and that can be easy because we don't need any land for that because already acquisition is there. We can save the money on that. So Prime Minister program on Gati Shakti, we have to create cooperation, coordination and communication between the stakeholders. On the basis of that we are doing. But now I am thankful for honorable member to asking me this question. Now we are framing the policy whether it is possible to work on BOT. If the private people can invest the money in duct and then we can give these services to the concerning department, it can be 100% whether it is possible or not. But because of today when I was taking the briefing, we have taken a decision to formulate the policy on PPP mode. If it is not economically viable on PPP mode, we can make it in hybrid annuity mode. We will finance some subsidy for that. But this is the need of the hour. Because as far as the target of our government is concerned regarding the popularity of internet and other things, it is very important. And I feel that this is the time that our target is to make the optic fiber cable up to 50 lakh kilometer. So we need to connect villages also. And because of 5G also, there is a great importance for that. We are working on the process, but basically my mandate is only for road construction. That is with the IT ministry and other ministries are there. But we have the land is ready. In Delhi-Mumbai Express Highway, we have a land available 120 meter. The one lane is only 3.5 meter. We are first stage making only 8 lane. We can go up to 16 lane. Still, we can give land for bullet train. Today, tomorrow, even if they want to start bullet train work from Delhi to Mumbai, land is available. We are also thinking on line of Hyperloop and something. And also the Delhi-Jaipur highway. The first time, the Prime Minister is going to inaugurate at 12, where we are planning for making of e-highway. From Delhi to Jaipur, the electric cable will be there. And the futuristic technologies are concerned. The idea is our truck and buses like the train, they're taking the advantage of that cable and going through Delhi to Jaipur. We are working on that, and that is also a first pilot project. I don't know whether how it can going to be a success, but it is a first trial for that. I am very much thankful for you for asking me this question. And again, I am humbly request you, all member of Tamil Nadu, in your constituency regarding NHI work, please cooperate us. We want to do it. Question number 105, Srimati Sajda Ahmad. माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर मत तो आई नहीं ना। सर मेंबर नहीं है सर। अच्छा सर, the issue is that the question that has been raised under part 2, B, whether the government has taken note that the huge virtual water trade of India is a great concern for water security, and if so, the details thereof. In your reply, in part B, you just check it out that this has not been spelled out in an elaborate manner. BC has been marked, but the core issue of virtual water trade has been conspicuously absent in your explanation in part B and C. We know that in the year 1993, the virtual water trade was conceived by Tony Allen. The name itself implies import and export of hidden water in various products. We don't have any idea of what is called virtual trade, because people
are not aware of it. I personally even not aware of it. Do you have any policy of virtual water trade in India? And what are the challenges and what are the benefits? Have you ever estimated on it? Because in the prevailing situation, I think this could be considered. But the question was raised, but the answer is seriously deficient. So that is why I thought it prudent to flag your attention. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने वर्चुअल वाटर ट्रेड के बारे में अपनी अनभिज्ञता और सदन की अनभिज्ञता के बारे में चर्चा की है। जिन सज्जन का नाम माननीय सदस्य ने लिया है, उन्होंने एक अध्ययन करके ऐसा बताया कि बहुत सारे क्योंकि जो भी कुछ उत्पादन होता है, चाहे भोजन का उत्पादन है, जो कपड़े हम पहनते हैं उसका उत्पादन है, जो हम सेवाएं जो हम उपयोग में लेते हैं, हर एक तरह की सेवा में कहीं न कहीं पानी की आवश्यकता होती है। जो कृषि के उत्पाद भारत एक्सपोर्ट करता है, उसको लेकर के माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की थी कि हम जो चावल निर्यात करते हैं, हम गेहूं निर्यात करते हैं, हम कपास निर्यात करते हैं, हम चीनी निर्यात करते हैं, ये सभी वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं और इनके निर्यात के चलते हम वर्चुअली पानी को निर्यात कर रहे हैं, जो कि भारत जैसे देश में जिसमें पानी की कमी है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो कृषि के क्षेत्र में पानी उपयोग होता है, इसके उपयोग को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने स्मार्ट इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रेशराइज पाइप्स के माध्यम से इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, जिसके लिए सामान्यतः माना जाता है कि 20% पानी की बचत होती है, और मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, इन सरकारों ने इस दिशा में बहुत बेहतरीन काम किया है। इसके अतिरिक्त जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप से आपको जानकारी होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें हर एक बूंद से अधिकतम उपयोग, अधिकतम उत्पादन हो सके, इस दिशा में काम करना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए भी सरकार काम करती है। इन सब के अतिरिक्त भी यदि मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, आप सबको इस विषय का संज्ञान है कि इस वर्ष को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर और अनुरोध पर मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से दुनिया में फूड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और उसके कारण से जो अवेयरनेस बढ़ रही है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर नेशन, क्योंकि हम दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट्स पैदा करने वाले देश हैं, सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ मिलेट्स पैदा करने वाले देश हैं। अगर इस समय में हम अपने किसानों को उसमें प्रोत्साहित करके अपने देश में और पूरे विश्व भर में उपभोग के लिए मिलेट्स पैदा करें तो हम वाटर फुटप्रिंट को नीचे ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी वाटर फुटप्रिंट को कम करने के लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये चावल के संदर्भ में कहा गया है, चावल के उत्पादन में आईसीआर ने इस तरह के सीड वेराइटीज को डेवलप किया है कि उन सीड वेराइटीज से पानी के उपयोग को 1/4 25% तक लाया जा सकता है। जहां 1.2 से 1.8 मीटर तक स्टैंडिंग वाटर, क्यूबिक मीटर तक स्टैंडिंग वाटर की आवश्यकता है, उसको 30 सेंटीमीटर तक रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि पानी और कृषि दोनों राज्य का विषय है, नीचे इस विषय को, इन टेक्नोलॉजीज को, वेराइटीज को प्रोपोगेट करने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्यों की है और बहुत सारे राज्यों ने इसमें बहुत अच्छा काम भी किया है। मैं हरियाणा का यहां विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने चावल के उत्पादन के रकबे को घटाने के लिए एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की और उसके कारण से लगभग 1 लाख हेक्टेयर रकबा उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वो डाइवर्सिफाई करने में सफलता प्राप्त की है। इसी तरह के प्रयास महाराष्ट्र ने भी किए कि जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि गन्ना और जो है कपास केवल ड्रिप इरिगेशन से ही उगाए जा सकते हैं। हमको निश्चित रूप से इस दिशा में संवेद स्वर से हम सबको भी बात करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हमको अपने क्षेत्र में, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि भी हैं और हम अपने क्षेत्र के लीडर्स भी हैं। हम अपने क्षेत्र में किसानों को अधिकतम उपयोग किस तरह से, पानी के न्यूनतम उपयोग में अधिकतम खेती किस तरह से कर सकते हैं, इस पर हम सबको निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसको वर्चुअल ट्रेड बैलेंस को कम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 श्री दुष्यंत सिंह जी। तो चेयर सर, माननीय मंत्री जी। अच्छा, पटल पर रख जाएगा। धन्यवाद स्पीकर जी। आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनर मिनिस्टर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
बड़े अच्छे काम किए हैं और उन्होंने उनके निर्देश में रीजनल कनेक्टिव स्कीम का काम शुरू किया गया है और जिसमें हब एंड स्पोक का काम शुरू किया गया है कि मतलब बड़े एयरपोर्ट से छोटे एयरपोर्ट बड़े एयरपोर्ट को लिंक करना था। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट किया गया है, अभी ट्रैवल अब बढ़ चुका है। मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि वर्तमान के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर्स हैं, एक कमेटी रिपोर्ट आई है, पेपर में भी लिखा गया है कि वर्तमान में जो वॉच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है, इसकी जो रेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें लोगों को इसमें जो ये क्या गया है कि डीजीसी ने मांगा है कि रूल्स की वर्किंग कंडीशन को बदलने का, कि वर्तमान की जो एग्जेम्पशंस हैं उसको 5 टाइम्स अभी पुअर कंडीशंस हैं इनके जो हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। क्या सरकार जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सतुलन करेंगी और क्या नई पोस्ट जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की पोस्ट है वो करने के लिए प्लानिंग करेंगी और ये कब तक होगा जिससे हमारे पूरे देश में जो आरसीएस एयरपोर्ट्स हैं और बाकी के एयरपोर्ट्स हैं इसका पूरा लाभ ले पाएंगे? धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एटीसीओज का सवाल है, डीजीसीए इनकी पूरी जानकारी रखता है, इनके बारे में पूरी तहकीकात करता है और एक का नंबर रखता है कि इतने एटीसीओज होने चाहिए। उसके हिसाब से हम उतने एटीसीओज के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय ने 2021 से अब तक 792 लोगों की रिक्रूटमेंट की है और इस समय 456 एटीसीओज के लिए कार्य प्रगति पर है ताकि ये ट्रेन होकर अपनी अपनी जगह पर जा सके। जहां पर एटीसीओज की कमी होती है वहां पर वॉचार्स उसी हिसाब से कम कर दिए जाते हैं ताकि जो वहां पर एक्चुअल ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कार्य किया जा सके। हमारा सतत प्रयास है कि हम जो भी रिक्वायरमेंट हमको दी जाए उसको पूरा करें ताकि हमारे यहां किसी प्रकार की कमी ना आए। सेकंड सप्लीमेंट्री सर, मैं राजस्थान के उस भाग से आता हूं जो एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है सर। झालावाड़ और बारां में हमारे झालावाड़ का जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जहां हाड़ौती में जैसे आपका क्षेत्र आता है, आपके क्षेत्र में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए, हमारे क्षेत्र में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए, हाड़ौती में के साथ साथ पूरे राजस्थान में एयरपोर्ट बनना चाहिए। क्या वर्तमान की सरकार राजस्थान के लिए जो आरसीएस रूट्स में हमारे एयरपोर्ट्स में नए रूट्स प्लान करेंगी और प्लान करने के साथ हमें अश्योरेंस चाहिए कि हमारे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या सरकार हमारे आरसीएस रूट करके देगी जिससे हमारे जो नए एयरपोर्ट बनेंगे, जिससे हमारे जो बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे क्षेत्र में, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनको आने जाने में और अब जो हब एंड स्पोक का जो आपका स्कीम अब चल रहा है, क्या हमारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को भी आप प्रोत्साहन करेंगे और आरसीएस रूट से जोड़ेंगे और क्या झालावाड़ को इस रूट से आप जोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, जहां तक का आरसीएस या उड़ान का सवाल है, सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसी स्कीम है जिससे कि उड़ान और हवाई जहाज से चलने का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। उड़ान एक मार्केट ड्रिवन स्कीम है जिसके अंदर एयरलाइंस समय समय पर जो बिड्स होती हैं उसके अंदर भाग लेती हैं और जिन रूट पर वो जाना चाहती हैं अपने व्यवसाय के एनालिसिस के बाद उसको वो लेती हैं। तो अगर कोई भी एयरलाइन झालावाड़ जाने के लिए तैयार होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम झालावाड़ को उसी हिसाब से डेवलप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एयरलाइन के ऊपर निर्भर है और इस समय जबकि सब कुछ मार्केट ड्रिवन है, सरकार सिर्फ उनको बता सकती है कि आप इसके ऊपर कार्य करिए, लेकिन उनको फोर्स नहीं कर सकती। श्री रितेश पांडे। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर्स की संख्या और बढ़ाने के लिए लखनऊ के ऊपर जो ज्यादा ट्रैफिक है
अयोध्या वहां से मात्र 120 किलोमीटर दूर है, जहां पे एयरपोर्ट बनकर के लगभग तैयार हो गया है। वहां पे फ्लाइट्स आने से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की वहां एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी और अयोध्या और अंबेडकर नगर, आजमगढ़ जैसे जिलों के लिए एक उपलब्धि जो है वहां पे, बस्ती भी जो है वहां पे एक उपलब्धि बढ़ेगी। तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की नियुक्तियां बढ़ाने के लिए क्या अयोध्या एयरपोर्ट को आप जल्द से जल्द चलवा करके वहां पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को आप नियुक्त करेंगे और वहां पे जो लखनऊ का ज्यादा ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा, एयर ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा कि नहीं, और कब तक होगा? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया जाता, सिर्फ जब कोई इमरजेंसी आती है तभी डाइवर्ट होता है। एयर ट्रैफिक अपने रूट्स के ऊपर चलता है, जहां पर हवाई जहाज ठीक से जा रहा है, हवाई अड्डा ठीक है, मौसम ठीक है, हवाई जहाज वहां पर उतरेगा। लेकिन जहां तक इस नजदीकी का सवाल है, जब भी एयरपोर्ट तैयार होगा, जब भी उसके ऊपर हवाई जहाजों का चलन होगा, एटीसीओज की जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 107 श्री बालाशोरी बल्लभ नेनी। 107 माननीय मंत्री जी। पटेल Sir, the allocation for education empowerment of minorities has come down in 2022 to 24. It came down from rupees 2,515 crores in the budget estimate of 2022-23 to rupees 1,689 crores in 2023-24. It means you are spending less money for education empowerment of minorities in 2023-24. Is it true? What is the reason for behind to reduce this much of amount? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक के रूप क्रम विशेष अधिकारी प्राप्त वर्ग सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजना को लागू किया। अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। पिछले 5 वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित शिक्षण सशक्तिकरण योजना, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिक उत्तरोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिक संसाधन अतिरिक्त योजना, रोजगार का आर्थिक सशक्तिकरण योजना, प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना जैसे हम लोग अल्पसंख्यक को ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NFDFC को नियुक्ति करते हैं। विशेष योजना जियो फारसी, भारत में फारसियों का आबादी में हो रही गिरावट को रोकने के हेतु योजना, कौमी वक्फ बोर्ड योजना। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य, अब जवाब तो 1 घंटा बोलते 1 घंटा चलाता है क्या? मान्य सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित क्रम संख्या 2 पर उपस्थित कागजात को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 श्री वीके सिंह जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय सभापति महोदय,
मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं मेरे साथी श्री रामेश्वर तेली जी के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, जो आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित है, उनको आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 7 श्री कौशल किशोर जी। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री भगवंत खुबा जी। धन्यवाद महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी श्री विश्वेश्वर टुडरी के नाम के आगे उल्लिखित दस्तावेज जो क्रम संख्या 9 पर है, मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं आपकी अनुमति से मेरे सहयोगी साथी श्री शांतनु ठाकुर के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, जो क्रम संख्या 10 पर अंकित है, उनको सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11 श्री निहाल चंद जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अपने नाम के आगे सुमुख एवं सूचीबद्ध प्राकलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 21 और 22 हिंदी और अंग्रेजी के संस्करण को मैं प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 12 श्री निहाल चंद जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज की संशोधित सूची में मेरे नाम के सुमुख यथा संकेतित एस्टिमेट कमेटी की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण को की प्रति मैं पटल पर रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आइटम नंबर 13 श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। सभापति महोदय, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 9वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 14 श्री खगेन मुर्मू जी। Thank you, sir. With your kind permission, I beg to present the 79th, 80th, 81st and 82nd reports, Hindi and English versions of the Committee on Government Assurances as listed against my name at serial number 14 in today's order paper. Item number 15, Shri Pratap Rao Jadhav ji. Ji. Sir, I wish to present the 37, 38, 39, 40th, 41st and 42nd report, Hindi and English version of the Standing Committee of Communication Information Technology as listed by my name. Shri Sanjay Seth ji ने किया। Item number 16, Shri Kaushal Kishore ji. सभापति महोदय जी, मैं श्री ब्रिजेंद्र सिंह संसद सदस्य द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत लक्ष्य के संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 5 के दिनांक 2/2/2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में अपना वक्तव्य अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले, जिन माननीय सदस्यों के 377 के अधीन मामले स्वीकृत हुए हैं, वो कृपया अपने विषय को सभा पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आइटम नंबर 18, केंद्रीय बजट पर चर्चा, श्री मर्गनी भरत जी। मर्गनी जी के बाद। Sir, our party is given 30 minutes of time, sir. So kindly make sure of that time. आप बोलिए तो। वही तो, party is given 30 minutes of time, sir. अब please start. Sir, at the outset, I am so grateful to place my views on the national budget 23-24, sir.
Sir, despite of the precarious situation globally, aftermath of pandemic and the war between the Ukraine and Russia, the finance minister managed to bring down, even though all the things, the global economic turmoil has been happening, the finance minister managed to bring down the fiscal deficit from 10 to 5.9%, sir, and the growth rate is around hovering around 6 to 7%. But how far the vision and the dream of the Honorable Prime Minister's $5 trillion economy can be achieved, sir? Sir, of course, we do understand. माननीय सदस्यगण कृपया बातचीत बंद करें. No murmuring, please. Please. Sir, we do understand that Honorable Finance Minister made her budget very balancing, sir. Sir, the 10 lakh crores of capital expenditure, which is coming around 3.3% of GDP, and there is a feel-good factor among the middle class through direct taxes, sir. And at the same time, if the government of India would have slashed down the cylinder price, the gas cylinder LPG price, they would have managed to gain a lot of attraction from the women voters, sir. But perhaps they missed that electoral gamble, I guess. Sir, primarily I have my own reservation when it comes to my state of Andhra Pradesh, where my state was unscientifically bifurcated and the injustice is made to my state many more times. I have represented in this house itself, and I wanted to reiterate to this government. Sir, the people of Andhra Pradesh, it is deeply bothering why this is the 9th consecutive year for the budget, sir. There is no prominent allocations made to my state, sir. And it is really heart-wrenching for the state of Andhra Pradesh, sir. Sir, as I said, the Andhra Pradesh state was bifurcated by the same old Congress party without any rhyme or reason, sir. Sir, just only for the political foul play or the political benefits, they have splitted the Andhra Pradesh state, divided. Is just like a birthday cake, sir. There is no any scientific evidence. When the state is getting bifurcated, they should have to see the repercussions, what is going to happen. But as I said many more times, the Hyderabad capital city is given to the Telangana, sir. Never in the history of independent India, when the state got bifurcated, the capital city will be restored with the residual state, sir. But here it is completely turned around. Sir, here the people of Andhra Pradesh invested our sweat and blood for about 70 years, sir. Sir, in turn, what we have achieved, and the great Hyderabad city has went to the state of Telangana, sir. Sir, now, as I said, sir, 9 years of the budget, there is no prominent allocations for the state. And also, that the act is made in this floor of the house, and the government of India should have to honor the act, sir, should have to implement the act, sir. But now the ruling party has left the people of Andhra Pradesh in lurch, sir. And I wanted to reiterate, sir, which is very loud and clear. And the parliament should have the ears to hear my voice, sir. And all the country should have to understand, sir. Sir, then the Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, has promised in the floor of the Parliament that in compensation for the bifurcation, Andhra Pradesh will be given the special category status, sir. So what all the benefits, what we get from this special category status, I would like to read out, sir. The preferential treatment in central assistance, the concession on excise duty to attract the industries, additional budgetary support from Government of India, 90% will be shared by the Government of India in centrally sponsored schemes, and 10% can be availed through loans. Sir, the tax concession to attract the industry, sir. All the above assurances
approved by the Union Cabinet in March 2014. Sir, here Telangana is not the new state, sir. Andhra Pradesh is the new state. We have been facing the burdens, we have been facing the troubles since 9 years, and the Telangana agitation for 4 years. So we are really dying for the development, sir. So all these 13 years we have lost the time for the development, sir. Sir, secondly, I would like to convey to this House that Article 4, it says that the bifurcated state under Article 3, the supplemental, incidental, consequential measures has to be taken care by the government and the parliament, sir. Where are all these? I've been asking, sir. Sir, for the better understanding, so many, the ruling party, I would like to quote in Hindi also, sir. सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करना चाहता हूं. मुझे ऐसा लग रहा है सर, मैं थोड़ा इतिहास को याद दिलाना चाहता हूं सर. भगवान राम को 14 वर्ष वनवास को भेजा गया था. उसी प्रकार हमारे आंध्र की जनता के साथ 10 साल का अन्याय किया गया सर. सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विनम्रता पूर्वक से अनुरोध करता हूं सर, आप भगवान राम के भाई भरत जैसा आंध्र राज्य को अपने कंधों पे रखकर विकसित रूप से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए सर. मेरा विनती है सर. He himself is Bharat. Thank you. He himself is Bharat. Sir, yes, carry on, please. Sir, and the AP Reorganization Act, sir, I would like to come to the AP Reorganization Act of 2014. The less I speak on this, the more the ruling party will be in the comfort zone, sir. Sir, we are not here to enjoy the luxuries. We are not here to enjoy the comforts. We are here to sweat it out and protect the rights of our country, and especially for the rights of my Andhra Pradesh state. We are here to make the legislation, sir. And here I request through you, sir, to the government to honor the act, to implement the act. Sir, where we have to go, sir. And this is after all a number game, sir. We are just 25 in number. That doesn't mean our voice is low. Our voice is loud and clear, sir. But the government should honor the act which is passed in this very house, sir. And I'd like to mention the few of the points which is included in the AP Reorganization Act, sir. Sir, the new railway zone. Sir, the railway zone has to be given to the state of Andhra Pradesh, sir, the South Coastal Zone, which is also included in the Act itself. But 9 years happened, nothing is being done, sir. And regarding the Polavaram project, the Honorable Minister rightly here in this house, sir, Gajendra ji, I'm just requesting you, sir, this is almost 9 years happened, and the revised estimation, which is around 55,000 crores, but that was estimated for 2019 and 20, and this year is 2023, sir. But how much the estimates will grow? And this is all the public money. We are not giving from our pockets. But this escalation will grow on, grow on and grow on. And we are wasting the money of the public, I guess, sir. Because the project has to get completed. And the last government, sir, I'm clearly stating, the last government has taken the contract of Polavaram project. And what they have did for the Polavaram project, 9 years happened. There was then lapses in the technicality. That diaphragm wall was breached. And up till now, that particular thing is not being addressed. The investigation is going on and some technicalities is coming into the picture. But nothing has been happening since 1 year, sir. The project is been stalled since 1 year, sir. Kindly, I request the Honorable Minister to make the cognizance of this particular issue, sir. And regarding the major port, sir, I've been talking about the major port, about Dugiraju Patnam port, sir, which is included in the act. It is clearly stating that in the year 2018, the first phase of the port works has to be get completed. But nothing has been started up till now. Why is this stepmotherly treatment to Andhra Pradesh, sir? Sir, due to some technicalities that they have shifted to Ramayapatnam port, but still the works has to be get started, sir.
and regarding the Kadapa steel plant. And our voice, sir, the Kadapa steel plant, always the Honorable Chief Minister comes to the Prime Minister and the Honorable Home Minister. We've been asking for the funds for the allocation of Kadapa steel plant also, sir. And we talk about the major rail projects, sir, especially the metro projects for Visakhapatnam and Vijayawada. So what happened to all these projects, sir? How can we compete with Bombay? How can we compete with Bangalore, Hyderabad and Chennai, sir? Sir, we are having the biggest cities is like Visakhapatnam and Vijayawada, sir. And of course, my constituency, Rajahmundry also. So I request through you to the Honorable Minister and the government to sanction the railway project, the metro railway projects to Andhra Pradesh, sir. Sir, coming to the greenfield crude oil refinery and petrochemical complex, this is also mandated to establish in Andhra Pradesh, sir. Sir, as we all know, perhaps the country must be knowing about the KG Basin. The KG Basin is located in the area of East and West Godavari's and the Krishna district, sir. Sir, you are taking out the oil and diverting to the Gujarat or any other places. So why can't we have the petrochemical complexes in the state of Andhra Pradesh? And how much the cost effective is been happening to the country? But the government of India, for erecting these petrochemical complexes, the government of India is asking for the viability gap funding, which was not mandated in the act, sir. Sir, I would like to reiterate to this house, why not the petrochemical factories, complexes are there at Daheja in Gujarat and Pardeep in Odisha. Did you ask for this viability gap fund in that particular area, sir? Perhaps I don't think you have asked for the viability gap funding. Therefore, I request the Honorable Finance Minister to allocate funds for this petrochemical complexes, sir. Sir, coming to the national picture as a whole, I appreciate the Honorable Finance Minister for delivering expansive budget amid the global economic turmoil, sir. It is good that she has opened the strings and pleased the taxpayers, especially in the view of the upcoming 9-state elections, sir. However, financing the fiscal deficit is challenging, sir. Sir, look at the receipts and the expenditure. So where the government of India could manage to get 17.5 lakh crores, sir. It is a fiscal deficit, sir. It is very challenging. Sir, the House would be very happy if the Finance Minister explains and elaborates the roadmap where these golden eggs are going to invest and how can these golden eggs hatch to become the golden goose, sir. Sir, my suggestions here to the government is primarily, apparently, we need to understand our strengths, sir. Sir, our Honorable Prime Minister always says, buy local, Atmanirbhar Bharat. Sir, we all know that the government, how come the public uses this nationalism? So we are talking about the Atmanirbhar Bharat, sir. But the government should show the sources to portray this nationalism, sir. Sir, in this context, I would like to give a suggestion. This is open the local marts for the groceries, for everything, sir. Open the local marts. Name it as a Bharat Mart or whatever it is. But this local marts has to open across the country in small villages also, from the length and breadth of the country, sir. And the only products which is available in that local mart should be made in India. And the local promotion should be happened, sir. In turn, the government should encourage with incentives. The government should encourage with the tax benefits, sir. So definitely, I think this model will completely achieve the dream of the Prime Minister, sir. And coming to the imports, sir, as we all know that imports, the crude oil is the maximum imports what we've been importing to our country, sir. So the alternative for this, the government is in this budget happened to allocate some 33,000 crores in the green energy and 17,000 crores in the renewable energy. Sir,
in the state of Andhra Pradesh, we are encouraging the pump storage, which is the hybrid model which is trending now, sir. The Honorable Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy ji, has also inaugurated 5,000 megawatt of this pump storage model, sir. So perhaps the country should think on this grounds and to extend across the country, so that at least by this year, if we can curtail to 20% of the crude oil imports, that will be a very good move, sir. And the second, the biggest import, what we import is very lucrative gold, sir. So I wanted to be very clear. So whether I could speak this, whether I could announce this, but still I am going forward, sir. Sir, increase of the export duty in the gold. However, apparently the number 2 gold, which comes from the borders or which comes from some other countries, and the currency which is lying, the 2,000 rupees notes, which is lying with the big tycoons, will come into the circulation, sir, and allow it. And after coming all these 2,000 notes into the circulation, and curtail and seize the routes of smuggling, sir. This is a win-win situation, sir. Almost, I think after the demonetization, we hardly see the 2,000 rupees notes now, sir. Sir, it is laudable that Government of India has done outstanding works in terms of road networking, sir. I should appreciate Nitin Gadkari ji for this. He also visited my constituency. And from this past 9 years, the Government of India is doing a phenomenal job in terms of the road networking, sir. Sir, the industrial corridors, sir. So the government has to be very aggressive in promoting the industrial corridors from north to south and east to west, sir. Sir, here I would like to quote Swami Vivekananda ji, as rightly said, sir. Youth is the foundation of the country, and they are the great asset to any nation, sir. They are with full of energy, enthusiasm and innovative ideas, sir. Sir, he called channelizing the energy into the right direction. They can drive the country on the path of progress. Sir, the youth in the country is the great asset for India, sir. Almost 50% of the population is youth, sir. Sir, likewise in this house also, we are not less than 70 to 80 members of youth parliamentarians, sir. Sir, my request here is to create a parliamentarian groups and send them across the globe, sir, for the study tours along with the scientific researchers, sir. Sir, we are ready for the nation building, sir. Sir, I would like to mention Taiwan is very famous in manufacturing semiconductors. It almost produces 50% of the global demand. Why not India, sir? Why not India? And I'd like to quote the Singapore, sir. Singapore is famous in electronics, logistics, transportation, and even biomedicines. Why not India, sir? Sir, the floriculture, agriculture, and the horticulture. So why can't the government will come up with the latest technology, sir? And when it comes to the floriculture, Amsterdam and Vietnam and Thailand is doing very well in terms of the agriculture and the horticulture, sir. The electronics in Japan. And why not all this in India? So we are not short of any competence, sir. We can move the world. But at the same time, constructing this industrial corridor, creating SEZs, creating MSMEs, creating small-scale industries, it will create, it will generate, it will accelerate the flow of money, sir. Sir, one thing everybody should remind, that our strength, we need to identify what are our strengths. We have a vast coastline. It is almost thousands of kilometers, sir. Sir, the marine products, the exports are really, really high, sir. So why can't the government concentrate? Of course, the government has allocated 6,000 and odd crores in PM Matsya Sampada, but still it is not enough. Sir, even Vietnam, even the Singapore and the nearby country, Bangladesh is doing very well in terms of aquaculture, sir. We need to promote more, sir. In my state of Andhra Pradesh, under my
pragmatic leader Y.S. Jagan Mohan Reddy ji, we are constructing 9 fishing harbors without any the support of Government of India. So kindly consider this suggestion also, sir. Sir, finally, I wanted to reiterate to this government. Sir, if you look at the breakups in sector-wise, 46% of the population are under agriculture, sir. Sir, how much the contribution of GDP through agriculture is just 20%. Sir, just because of lack of technology, just because of the promotion from the government, the farmers has to understand, the government should push the farmers to inculcate the new technology, sir. Sir, see Vietnam, how best they are doing. Get the scientific scientists or trainers from the different places of the world and train our farmers. Definitely we could contribute more, sir. Sir, every youngster should feel that I can do agriculture when I become elder. But none of the youth in the country are ready to do the agriculture, sir. This is the fate of the country. And the second thing is 32% of population dependent on service sector, sir, and contributing phenomenal and extraordinary. The highest is 54% of our GDP, sir, and 21% of the people are dependent on industry, sir. Sir, contributing 26% of the GDP, sir, and it has to be also improved, sir. Sir, with these suggestions, with these points, I'd like to conclude. Before concluding, sir, with the folded hands, sir, from the people of Andhra Pradesh and on behalf of my Chief Minister, I request Government of India to grant us special category status, honor the act. Sir, we are like a small baby, sir. I request the Government of India to care us, nurture us with empathy, and with just a father figure is there in front of us, sir. But why the government is not honoring the act, sir? Why the government is not implementing the act, sir? Sir, with these words, I conclude. Definitely, the God is there, sir. God is watching everything. Definitely, Well the said, good days well said. will come to the state of Andhra Pradesh. Thank you so much, श्री sir. शौकत राय जी। शौकत राय जी, अच्छा नहीं बोलना चाहते क्या? Sir, I rise to speak on the budget discussions. It is very unfortunate that yesterday also budget discussions took place. Today it is taking place. The finance minister has not been present on either occasion. The budget discussions belong to the Lok Sabha. Rajya Sabha has no power. I understand the finance minister is from the Rajya Sabha. Why isn't she there either of the day? What is he talking about? आज प्रधानमंत्री जी का डे है वहाँ क्वेश्चन का, प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, इसलिए जितने भी मेंबर जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो वहाँ प्रेजेंट हैं क्वेश्चन डे के कारण वो आ रहे हैं, वो दोनों फाइनेंस मिनिस्टर आप ये बताओ, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, ये मत कहो जवाब। behalf of finance minister, I am Minister sitting of here. State है, sir. He is in ये Rajya कितना Sabha. Honorable संभालेंगे? Prime Minister is there. includes गुजरात में भी नहीं रहते हैं। दूसरी बात है सर, the other minister, railway minister, whose budget also comes up on this, he is also not there. These are all big people. They don't care. Otherwise, Lok Sabha has full power as far as budgets are concerned. दोनों नहीं है। ये मजाक है क्या? सारे मंत्रालय का बजट इस बजट में आता है, सर। नहीं। Railway minister should be present to listen to our objections. Sir, I speak on the budget discussion. Before I go to my main demands, I want to mention 2 points regarding our state of West Bengal. The West Bengal has been deprived of its share of NREGS funds. 7,300 crores are spending from the center. Along with Sudip Bandyopadhyay, we all went and met the rural development minister. Our local minister went and met him. He said everything is all right. Still money is not being released. He also belonged to a rural area. Just imagine the situation in the rural economy. If total NREGS funds are stopped, people will be starving. And this is... He'll start 6 months.
माननीय सदस्य, या तो आप गोली को रख दो, जो हाथ में गोली फाड़ी है ना आपने। नहीं, ये तो हाँ, एलेक्स है, एलेक्स है, ठीक रखने, गला ठीक रखने। ये अलग पानी देता हूं आपको ना, गर्म पानी। प्रधानमंत्री जी के तरह वो तो पानी पीते हैं, मैं एलेक्स खाता हूँ, गर्म पानी। हाँ। ऐसे गैलेक्स खाना, गोली खाना सदन में अलाउ नहीं है। सर मैं this is for the health, sir. For health. Now, I demand that the money for NREGS for West Bengal should be released immediately, and the government should give up its cruel attitude. Number two, I have to speak something about railways. The finance minister made a big hue and cry that he has given 11,000 crores to West Bengal for unfinished projects. But nothing is finishing. He will earn name as a railway minister who's very smart. He is starting Vande Bharat trains so that PM can go and inaugurate. These have no long-term benefits. And in West Calcutta metro system, he is inaugurating truncated lines. That is, there is a line from Behala to Bibadibag. He goes 1/3 and inaugurates up to Joka to Taratala. So I demand that whatever railway projects he is doing, let him complete them instead of inaugurating truncated lines. Sir, I wanted to speak on the budget. Nirmala Sitharaman herself called her budget beautifully balanced. I have never heard a finance minister praise her own budget. She is saying India said to be $5 trillion economy, budget beautifully balanced. I'll talk about the balance later. But it's unfortunate that the finance minister budget speech does not mention the words unemployment, poverty, inequality, inflation, or equity anywhere in the speech. So even if it is beautifully balanced, it is that of an accountant. This budget has no vision about the future, and it is not futuristic but opportunistic, anti-people and anti-poor. This is what Mamata Banerjee said about the budget. Sir, unfortunately, as soon as the finance minister presented his budget, the next day an avalanche took place. Avalanche of what? Hindenburg research report. One short-selling firm from America, they released a report about a company in India. I will not name the name. Sir, when we were small, after sunset, we could not use the word sap. My mother used to say, don't say sap, say lata, lata. So now, there is a new word. We cannot mention somebody's name. We have to a company, this company. But this company is everything. We can't mention the name. Just like my mother told me when I was young, living in a village. Snake we could not mention. If 353 nowhere permit you, then you can't mention it. Either you get... You have become the new spokesman for the ruling party. To prevent the opposition protest. You have become the new spokesman after being dropped from the ministry. You have started explaining everything. Go back to the ministry. The chairman of the Jan Vibhag. I am chairman of Jan Vibhag. That is not the way. अरे आप That इधर is the new way. आप बात है ना माननीय सदस्य इधर करा करो. कोई नियम हो तो इधर बताओ. उनको क्यों नियम बता रहे हो Some professional hecklers have sprung up. Their job is to disturb the opposition whenever they speak. Right. I cannot take concern about them. Now, sir, I'll be very brief on this matter. I have other things to speak about.
The Hindenburg research report said that a certain company did round tripping of its finances and they bought up assets in India after round tripping them from abroad. After that, an avalanche. You know, in the snowy areas, the ice comes down. The ice came down on this company's shares. In 3 days, it lost 10 lakh crores of rupees. Now, if ये कौन सी कंपनी आप लोग बताओ, इसका नाम तो नहीं किया जाए, साफ है. तो अरे हमारा कोई डर नहीं है, अदानी बोलने से ये लोग बोलेगा काट दीजिए, उनका नाम नहीं करना चाहिए, ये साफ है. तो सर, I have a simple demand before the finance minister. She has got the SEBI under. If a company has done round tripping, it is the job of SEBI to look into it. I demand that she ask the SEBI to inquire into fallen shares of this certain company. Also, the Enforcement Directorate, ED, matter of fear for the opposition, is also under the finance minister. They are investigating each and every opposition politician. Why the ED is not investigating the affairs of this company? Because he is not in opposition. This is. He is not in opposition. He is not in opposition. Yes, very right. Lalanji is first-class leader from Bihar, president of the JDU. He is supporting me, and I thank him for the same. So now, I'll call this budget basically an anti-farmer, anti-poor, anti-rural areas budget. You know what they have done? They have reduced allocation for MG NREGA. क्या है? क्या? तुम्हारा डिवोर्स हो गया? आप माननीय सदस्य डिस्टर्ब. अच्छा, ठीक है. Sir, there has been reduction in the allocation of MG NREGA and cut in food, fertilizer and petroleum subsidies. This is anti-poor. Sir, you will know that food subsidy has been cut from 2.87 lakh. Sir, what is it that I am saying that is objectionable? Please. This young man is shouting. He is shouting. Please. You put him down, sir. Food subsidy has been cut from rupees 2.87 lakh crores to rupees 1.97 lakh crores. Fertilizer subsidy has been cut from rupees 2.25 lakh crores to 1.75 lakh crores. These cuts will expose Indian farmers to the vagaries of the global market and render the economics of agriculture even more fragile. This is a very serious matter. This should be looked into. Sir, what were you expecting? I was actually originally thinking of praising the finance minister because she has called herself the budget is beautifully balanced. So I thought that yes, is balanced, but his balance is that of an accountant. You know, in the finance ministry, there is a deputy secretary who tallies the budget and he ultimately balances both sides. The finance minister has done just that. This was the opportunity when inflation was under control, GDP was rising, current account balance was better, fiscal deficit was under control. This was the time to take a big step forward. What did Abhijit Vinayak Banerjee say at the time of pandemic? He said that give some cash dole in the hands of the poor. The budget does not mention anywhere the word migrant labor, who were the biggest Achilles heel of the Indian economy.
People walking hundreds of miles to their destination when the pandemic broke. They have not been mentioned. The top economists of the world wanted them to be given some cash dole, some money. The finance minister did not. The other thing she could have done in a stable macroeconomic situation, she could have reduced the prices of petrol, diesel, and of LPG. Because if you have a little financial space, that is the time to give relief to the common man. She did not do this because she had to balance the budget beautifully. So this budget ultimately turned out to be what? Anti-poor. Anti-poor people. So that is the budget. So now you are talking about digital India. Now digital India is all right. But sir, you must be knowing that technology takes away jobs. Today, all the big tech companies like Microsoft, Meta, Amazon, they are all retrenching people. They are called pink slips in America because technology always relentlessly takes away job. So to talk about digital India, Industrial Revolution 4.0, artificial intelligence 3 centers will not solve India's problem. India's basic problems are poverty, destitution, migrant labor, and of course unemployment. The employment has not been addressed at all. The finance minister will come and say, see, I have increased so much in capex. Capex is what? Capital expenditure. How much she has given? 10 lakh crores. Very big sum. But does the capex get translated into projects anywhere? No. You give the money today, the project will take another 1 year, 2 years to start. What happens in the meantime? And when you are building infrastructure projects, the main problem is that they take lot of time. Some people get employment during construction. But after construction is over, they lose the jobs. So you are taking India towards a jobless future. From a very favorable situation, you are taking India to a jobless future, Berojgar. I see Mr. Gajendra Singh Shekhawat doing namaskar to me. I like that. He is the favored child. Oh, he did namaskar to you. And Navneet must have been. That would be only more proper. Sir, there are only 2 favored children. Who are favored children? One is this Jal Jeevan Mission. Jal Jeevan Mission. They have got 70,000 crores. And the other is PM Awas Yojana. They have got 79,000 crores. But NREGA has received a cut. So if you develop only 2 projects, that will be enough to alleviate India's problems. I do not think so. I think you are making a mistake. सुनिए ना आप जो किए हैं मेरे पास ये है, आप क्या क्या किए हैं? जो नहीं किया है वो बोलना मेरा काम है, जो किया है वो बोलना आपका काम है। जो बोला है सुनो। दादा, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आज सुप्रिया जी से गाइड हो रही हैं क्या? सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये समझते हैं बुढ़ा आदमी बोल रहा है,
इसको मदद किया जाए, ये सब लोग मदद कर रहे हैं। जो किया वो बोलना आपका काम है, जो नहीं किया वो मेरा काम। सर तुम पूरा पागल है, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बीबी भाग गया, तुम पूरा पागल है। ये हटा दिया। माननीय स्पीकर साहब, दादा को नवनीत जी ने नमस्ते नहीं किया, इसलिए उन्होंने सुप्रिया जी का सहारा ले लिया। सर द अदर थिंग इज, डू यू रिमेंबर, ये प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया फार्मर्स इनकम 2022 में दोगुना हो जाएगा। आपको कोटा में भी तो फार्मर है, उनका इनकम दोगुना हुआ? नहीं हुआ। सर दे प्रॉमिस that by 2020 everybody will have a house, everybody। कहाँ सब लोग का घर हुआ? आप बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्वरोजगार योजना, उसमें सब लोग का घर मिल जाएगा, घर नहीं मिला। सर ये जुमला का सरकार है, एक साल एक सवाल उठाते हैं, एक साल। अच्छा डिवोर्स के बाद इसको दिमाग में गड़बड़ी हो गई। सर सर इसको तार कट गया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, इसको तार कट गया। सर last year they made a promise asset monetization pipeline that they will get money out of the। एक सेकंड। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, किसी भी माननीय सदस्य के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग मत करो। आपको वो करेंगे तो उनको भी इसी भाषा में कहूंगा। उनका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप अलाउ कर रहे हैं इसलिए हो रहे सर, आप उनको रोक नहीं रहे। नहीं रोक नहीं, मैंने कह दिया उनको, बैठ जाइए, आप बोलिए। सर आपको नहीं अलाउ किया मैंने। लास्ट ईयर दे स्पोक ऑफ, प्लीज दे स्पोक अबाउट एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इस साल है बजट में? नहीं, कुछ एसेट मोनेटाइज नहीं हुआ। They used to speak about disinvestment। अगले साल भी 50,000 करोड़ था, इस साल भी 50,000 करोड़ बजट में। कभी कोई आपका एसेट लेने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। योर प्रोग्राम्स आर फेलिंग वन बाय वन। अनाउंस्ड, निर्मला सीतारमन हैज दिस एडवांटेज, शी मेक्स एन अनाउंसमेंट, फॉरगेट्स अबाउट इट नेक्स्ट ईयर, बट वी कीप लास्ट ईयर्स बजट। We remember what all she said, and that's why, sir, this budget done with good intentions at a time when Indian economy was recovering from the downslide of the COVID, missed all the opportunities. It turned out to be, I'll briefly complete my point, sir, बहुत डिस्टर्ब कर दिया। ये तार कट जाता है लोगों को और हमको डिस्टर्ब करता है। सर अच्छा, कल अधीर चौधरी गलवान के बारे में बोला कि चाइना कितना पॉइंट गलवान में दखल किया, कितना पॉइंट अरुणाचल में दखल किया। क्या जरूरत था डिफेंस बजट बढ़ाने का? कहां बढ़ा? 1.5%। It has remained almost the same if you take in inflation। अभी तक छत्तीसगढ़ में माओवादी लोगों को मार रहे हैं, एक बीजेपी को आदमी को मार दिया परसों। कहां सीआरपीएफ का अलॉटमेंट? वो भी नहीं बढ़ा, 1.5%। ये लोग बोलता है हेल्थ और एजुकेशन में पैसा देगा, एजुकेशन में केवल 2.9% सारा बजट का अलॉटमेंट एजुकेशन के लिए। हेल्थ का इतना प्रॉब्लम है, वहां भी कोई अलॉटमेंट नहीं है। देखिए तार कट गया ना, उनका तार कट गया। सर लास्टली
lastly, I want to say that giving allocation is not enough. In our country, you have to see that on the ground, projects are implemented. Government has spent 22,000 crore less of what it had allocated for capex, capital expenditure, this fiscal. Allocating money is not equal to spending money, nor is allocating money equal to creating jobs. They have mentioned all तार काटा हुआ प्रोग्राम ये दिया है. सर, आप सुनिए. सर, आप सुनिए, कुछ प्रोजेक्ट का मेंशन किया यहाँ. कुछ प्रोजेक्ट का मेंशन किया. आप ये प्रोजेक्ट, इसमें एक पैसा भी नहीं दिया गया. सर, क्या भाई? क्या प्लीज मानिए. सर, ये क्या हो रहा है? ये एक तो प्रॉब्लम होगा. अभी भी हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी एंड FDI, they constitute 40%. Since last year, FDI is escaping from the economy. You find out how much FDI money has gone out. Private investment is being squeezed out because the government is doing huge borrowings. So the private sector is not being able to mop up resources. So this point that I am giving everything to capex, I am creating a deficit financing, that creates a problem. ये देखिए अनाउंसमेंट किया कुछ प्रोजेक्ट का. एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, PM प्रणाम, गोबर धन, खेती, नेचुरल खेती, बायो इनपुट, मिष्टी, ये मैंग्रोव के लिए है, अच्छा है. अमृत धरोहर, इवन मिलेट्स. सर, एक पैसा भी अलॉट नहीं किया. केवल फिनांस मिनिस्टर ये बजट स्पीच में अनाउंसमेंट किया, बजट पेपर्स में इसका कोई मेंशन नहीं है. PM प्रणाम, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, गोवर्धन, नेचुरल खेती. और ये नेचुरल खेती क्या होता है सर? इसका कोई, आप गोवर्धन के पक्ष में है कि गोवर्धन, बिल्कुल गोवर्धन योजना इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, और उसके लिए जो है 7,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन नहीं. यू शो मी द बजट पेपर. आई एम कैरिंग ऑल द बजट पेपर. आप दिखाओ उसको कहाँ एलोकेशन. आई एम कैरिंग द बजट पेपर. शो दिस आर ऑल अनाउंसमेंट्स विदाउट एनी मीनिंग. सो दिस इज ऑल चीटिंग, फजलिंग, बिफडलिंग. हाँ, ये सब वैलेंटाइंस डे प्रेजेंट है. सर, लास्टली आई वांट टू से दैट आप देखिए, एक तो बजट पेपर में एक तो अच्छा पिक्चर है. हमारा रुपया कहाँ से आता है? हमारा रुपया इनकम टैक्स 15%, एक्साइज ड्यूटी 7%, कॉरपोरेशन टैक्स 15%, GST 17%. तो आप इनकम टैक्स आप छूट दिया. कितना? 0.1%. 38,000 करोड़ रुपया हमारा इनकम टैक्स. टोटल हमारा कलेक्शन जो है 25 लाख करोड़, उसका 1% है. ये कोई छूट नहीं है. और आप क्यों बड़े लोगों को सरचार्ज पर छूट दिया? वो देना नहीं चाहिए था, गलत किया. ये बजट इस टिंकरिंग, एक गवर्नमेंट 2 साल पहले एक तो अटल टिंकरिंग लैब शुरू किया, उसमें थोड़ा सा इधर उधर करता है. ये भी बजट इकोनॉमी को लेकर टिंकरिंग किया. और देखिए, डिफेंस इज ओनली 8%, सब्सिडीज कम करके 7% कर दिया, स्टेट शेयर 18%. एक ही अच्छा काम हुआ, 50 साल के लिए स्टेट्स को 1 लाख करोड़ रुपया लोन दिया बिना इंटरेस्ट में. अच्छा है.
स्टेट को 3.5% फिस्कल डेफिसिट अलाउ किया, ठीक है, लेकिन ये है समय जब इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है। यही समय था टू मेक ए फ्रंटल अटैक ऑन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी अगर स्टेबल है तो आप गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाओ, अपना दल भी स्ट्रांग होगा। आप भी करो अनुप्रिया जी, ये उसका ये मत रहो। पैसा सर, ये जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है ये देश को लूटेगा, ये कुछ नहीं करेगा सर। आप और हमको गरीब के साथ रह के लड़ाई लड़ना है, और इसलिए मैं ये बजट प्रस्ताव को समर्थन नहीं पा रहा हूं। मैं फिर मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल का एनआरईजीए का रुपया अभी देना चाहिए, और पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना के रुपया अभी देना चाहिए, और रेलवे मिनिस्टर कलकत्ता जाए और हमारा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को इनागुरेट करे। मैं बहुत आभारी हूं कि आप धीरज के साथ मेरे भाषण सुने। मैं आपको नमस्कार। श्री रंगप्पा बढ़ने, किसको बुलाना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी पार्टी के तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उस पर मेरी बात रख रहा हूं। यह बजट भारत की आजादी के 75 साल होने पर अमृत काल का पहला बजट है। यह बजट महत्वाकांक्षी और समावेशिता पर केंद्रित है, जहां विकास का लाभ किसानों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती यदि सभी नागरिकों को तक पहुंचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लक्षित लाभों के सार्वभौमिकरण के साथ ही कई योजना और प्रभावी ढंग से लागू की योजना का परिणाम स्वरूप समावेश यह बजट है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू टॉयलेट का निर्माण किया गया है। आज दुनिया में भारत को एक उज्जवल सितारे के रूप में मान्यता दी है, इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी अंत्योदय को प्राथमिकता दी है और परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है, जिसका 2 लाख करोड़ पूरा खर्च केंद्र सरकार करेगी। यह गरीबों के हित के लिए उठाया एक क्रांतिकारी कदम है। अध्यक्ष जी, इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66% बढ़ा दिया है। सरकार का यह कदम स्वागत है। अध्यक्ष जी, इस बजट में एमएसएमई पर खास ध्यान दिया गया है, जैसे कि उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और 80 पोर्टल को वापस में जोड़ा गया है। 130 लाख एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी की योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय करीब दुगनी होकर 1.97
लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में बन गई। देश करीब 2 साल तक कोरोना से लड़ा। देश करीब 2 साल कोरोना से लड़ा था, लेकिन मोदी सरकार ने देश के आम आदमी के हित में को ध्यान देते हुए जनहित के फैसले लिए और इनका लाभ देश के सभी जनता को हुआ है। आज देश दिन तक 102 करोड़ लोगों को लक्षित किए हुए कोविड विरोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार हुआ है। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के जुड़े लोगों को बधाई देना चाहिए। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए नगद हस्तांतरण किया है। देश का किसान सभी और खुशहाल हुए। माननीय मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जल जीवन मिशन के तहत करीबन 70,000 करोड़ सभी राज्यों को दिया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाके में पानी की योजना होते हुए कई सारे ग्रामीण इलाकों को इसका लाभ पहुंचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पीएम गति शक्ति को बढ़ाने देने वाली 7 कारक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक ये इस पर ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष जी, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्माण, बहुपक्षीय कन्वर्टिंग और लॉजिस्टिक के दायरे में आए। राष्ट्रीय अवचरण पाइप लाइन में 7 कारकों की जुड़े इस परियोजना का लाभ सब देशवासियों को हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेटवर्क में 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्किंग में विस्तार करीबन करने के लिए 20,000 रुपए जुटाए जाएंगे। इसमें देश का चौमुखी विकास होगा। अध्यक्ष जी, एक समय इस देश में आधारभूत सुविधाएं में कमी होती थी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कमी होती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए सरकार में ये यशस्वी कदम उठा। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस निर्माण में गति दी और माननीय नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में आज देश में सीमाओं तक वर्ल्ड क्लास सड़कों का निर्माण हुआ है। एक समय था कि देश में सीमाओं पर सड़क का निर्माण नहीं था। आज यह सरकार द्वारा यह मानांकन बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 8 वर्षों में राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई में करीब 50% वृद्धि हुई है। अप्रैल 2014 में राजमार्ग की लंबाई 91.287 किलोमीटर बढ़कर 2021-22 में 1,40,995 किलोमीटर हो गई है। कुल बजटीय करीबन 5.5 गुना वृद्धि हुई है। आज भारतीय राजमार्गों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ये सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ये माननीय नितिन जी गडकरी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश में आज मेट्रो रेल का जाल बिछा रहा है। यह बजट में पिछले बजट की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक साथ जब रेल कोच का आयात करते थे, लेकिन आज हम वर्ल्ड क्लास कोचिंग का निर्माण
देश में करते। अध्यक्ष जी, मोदी के नेतृत्व में देश अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण देश में करेगी। साथ ही अगले 3 साल के दौरान नई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे से लोनावला तक लोकल सेवा चालू करने के बारे में लगातार यह बात रखता हूं। केंद्र सरकार द्वारा इसमें जल्दी से जल्दी अगर सहायता देगी तो निश्चित रूप से यह मार्ग भी बनेगा। दूसरा, कर्जत से पनवेल और पनवेल से उरण तक का मार्ग धीमे गति से चल रहा है, तो ये मार्ग पर रेल विभाग द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान कुछ जरूरी मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में रिटायर कर्मचारी की संख्या करोड़ों में, सरकार की और उन को दी गई राहत प्रदान नहीं की जाती है। सरकार पेंशन राशि पर इनकम टैक्स वसूल करती है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 के बजट में घोषणा में वरिष्ठ नागरिकों की बचत लिमिट को 1 लाख से 5 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख किया है, जिसका मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। परंतु इस बचत पर कमाए ब्याज पर जो टैक्स देना होता है उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। पिछले बजट में 75 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को ITR दाखिल करने पर एग्जेंस किया है, पर उनकी ब्याज में कई कमाई पर TDS कट नहीं लेगी। जब ITR भरने पर TDS कैसे वापसी मिलेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 साल के आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक मेडिकल बीमा के लिए पात्र नहीं है। इसमें सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट गए 9 साल का कार्यकाल का माननीय मोदी जी के बजट का एक सर्वोत्तम बजट है। इसमें सभी लोगों पर ध्यान दिया है, जैसे कि गरीब हो, किसान हो, कर्मचारी हो, इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। एक अच्छा और सराहना बजट पेश किया है। माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं। एक अच्छा बजट यहाँ पेश हुआ, उसका स्वागत भी करता हूं। श्री महाबली सिंह जी। सभापति महोदय, केंद्रीय बजट 2023-24 जो सदन में चर्चा के लिए, सामान्य चर्चा के लिए लाया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, जब भी सदन में बजट पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष के लोग जो हैं बजट की सराहना करते हैं। हमेशा आजादी के 75 साल हो रहे हैं, इन 75 सालों में जो भी सरकार बजट बनाई, सभी सरकारें दलित, पिछड़े, अकलियत, किसान, मजदूर के हित में कह करके लोगों ने बजट बनाई। लेकिन सरकारें बदलती रही, बजट बनते रहे और बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तस्वीर आज तक नहीं बदली, आज तक नहीं बदली। आज भी करोड़ों लोग, आज भी करोड़ों लोग गंदे नाले और पेड़ों के नीचे जन्म लेते हैं
और वहीं पर मर जाते हैं, वहीं पर आज भी मर जाते हैं। इसलिए महोदय हमें इसके तरफ नहीं जाना है, लेकिन हमें सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि बड़ी अरमानों से बिहार की 13 करोड़ जनता ने आपको 2019 में 40 सीट में से 39 सीट एनडीए के खाते में डालने का काम किया था, लेकिन 40 सीट में से 39 सीटें 40 बहुत आशा, उम्मीद और अरमान के साथ इस बजट पर निगाहें रखी थी बिहार की जनता। उसको विश्वास था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस बजट में जरूर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि यह मांग जब बिहार में गठबंधन हम लोगों के एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार थी, उस समय विधान परिषद से लेकर विधानसभा तक सब लोगों ने पारित करके भेजा था केंद्र को कि हमको बिहार की विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो केंद्र सरकार ने उस समय वादा किया था कि बिहार को हम लोग विशेष पैकेज दे करके विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने का काम करेंगे। न तो बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिए, न बिहार को कोई पैकेज दिए। झूठ नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपने बिहार को कौन सा पैकेज इस बजट में दिया है? कहां है? जरा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कहां आपने विशेष पैकेज दिया है। न बिहार को विशेष पैकेज ही हुजूर दिए। सर यहां तक कि देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये पवित्र मंदिर है। प्लीज, इस मंदिर में हम बता देना चाहते हैं कि यहां से जो भी घोषणाएं होती है जमीन पर उतरना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए। 2000 बिहार के अंदर 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री ने बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। उस समय 3,500 की, आज 3,500 करोड़ की वो योजना हो गई, लेकिन शिलान्यास होने के बाद आज 14 साल बीत गए, आज तक वह बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम जमीन पर नहीं उतरा। अब बताइए महोदय कि हम लोग यहां सदन में चर्चा करते हैं, बिहार की जनता पटना से लेकर दिल्ली तक धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते आ रही, और वह 4 पार्लियामेंट का क्षेत्र था। सभी माननीय सदस्य जो आज बोल रहे हैं, हमारे राम कृपाल जी, इन्होंने भी कई बार रेलवे मंत्री से मिला, हम लोगों ने मिला। अब 13 साल से बताइए महाराज कि 4 पार्लियामेंट का वो क्षेत्र है, एक छोटा सा, आज रेलवे लाइन नहीं बन सका। डालमिया नगर 7 में, रोहतास के डालमिया नगर, डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को 7 में उसका शिलान्यास हुआ था, तत्कालीन रेल मंत्री ने किया था, रेलवे वैगन बनाने के फैक्ट्री के लिए। अब बताइए 13-14 साल हो गया महाराज, 14 साल से विगत जो तत्कालीन आपके रेलवे मंत्री अभी थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने सदन में वहीं से कहा था कि 2022 तक हम लोग हर हालत में डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को, जनता के हाथों में रेलवे फैक्ट्री को हम लोग चालू करके देंगे। बताइए, आज तक कुछ जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन, आज तक वो 7 में शिलान्यास हुआ, आज तक वो भी काम नहीं हुआ। आप खाली देखिए आश्वासन और झूठ के सहारा लेते हैं, झूठ से काम नहीं चलेगा। बिहार को बिना विकसित किए हुए
आप देश को विकसित नहीं कर सकते। बिहार महात्मा बुद्ध की धरती, जहां से विश्व को संदेश देने का काम किया, वो महावीर की धरती है। और वैसे धरती को आप उपेक्षा करके, उसको अनदेखी करके, उसको अरमानों पर पानी फेर करके आप देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है महोदय? एक बात हम कहना चाहेंगे महोदय, कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति महोदया ने जो भाषण दिया है, और उसने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास, और आपने कहा सबका प्रयास। हम मानते हैं, आप कैसे सबका साथ ले सकते हैं? आप सबका प्रयास कैसे ले सकते हैं? आज आप 75 सालों में अमृतसर महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत का महोत्सव मना रहे हैं, और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है, वो आज भी अपमानों का जहर पी करके इस देश में जिंदा है। आप पूछ लो, अमृत को वोट से लगा लिए, आप अमर हो गए, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा जो समाज है, आज 75 वर्षों में आजादी के, आज भी अपमान का जहर का घूंट पी करके जी रहा है। आप सबका प्रयास की बात करते हैं, सबको विश्वास लेने की बात करते हैं। ये कैसे विश्वास आपको मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? सबका प्रयास कैसे आपके साथ हो सकता है? इसके लिए सभापति महोदय, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, देश के आजादी में इस देश के सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस देश का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों ने इस देश की आजादी में कुर्बानी दिया है। और सब लोगों का ये अधिकार है इस देश के मिट्टी में, इस देश के हवा में, इस देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, सब लोगों का अधिकार है। सब लोगों को जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा, तो कहिएगा कि सबका हमको प्रयास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए। एक तरफ देश के अंदर कोई हेलीकॉप्टर से जाकर के शादी विवाह अपनी बहू बेटियों का करता है, और इस देश के अंदर दलित, आज भी दलित जो है, घोड़ा पर चढ़कर अगर शादी करने जाता है तो उसको आप उतार देते हैं और कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक उपाय है सभापति महोदय, अगर हमारी केंद्र सरकार अगर चाहती है कि सबका प्लीज बैठ जाइए, अगर आपका जब अवसर है तब बोलिएगा। तो एक ही उपाय है महोदय, कि जो इस देश में सामाजिक जो व्यवस्था है, यह गैर बराबरी व्यवस्था है, और यह व्यवस्था, जैसे आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा कि इस देश में जाति कोई भगवान ने नहीं बनाई है, आदमी ने बनाया है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहते हैं, इस देश को विश्व में सबसे महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक काम तो देखिए करना होगा। एक काम क्या करना होगा कि या तो जो लोग गैर बराबरी व्यवस्था के तहत जो लोग नीचे गिराए गए हैं जात पात के नाम पर, उन लोगों को आपको ऊपर उठाना होगा, और उनको ऊपर उठाने के लिए
उनको ऊपर उठाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के सीमा में जितने रेजिमेंट हैं उसमें सब लोगों को भागीदारी देना होगा। सब लोगों को भागीदारी देना होगा। सब लोगों को भागीदारी देना होगा। अगर आप भागीदारी देना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम और करना होगा। अब समाप्त कीजिए जी। अरे महोदय, हमारा 20 मिनट का टाइम है। और भी वक्ता है आपके दल के, 20 मिनट का समय है महोदय। आपके दल के और भी मान्य सदस्य हैं, इसलिए महोदय आपको सबको जब हिस्सेदारी देना होगा तब इस समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी और सब लोगों के अंदर देश के प्रति ममता होगा। तो इसलिए उसके लिए एक काम करना है कि देश के अंदर आप जातीय जनगणना कराइए। देश के अंदर जातीय जनगणना कराइए। जब इस देश का जब जानवर की गिनती हो सकती है, इस देश में शेर, भालू, चीता, भेड़िया की गिनती हो सकती है, उसकी जनगणना हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, तो तब मानव की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? और जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा सभापति महोदय कि कौन जाति की इस देश में कितनी संख्या है। और जब तक संख्या उनकी गिनती नहीं होगी तो उनको हिस्सेदारी और भागीदारी ये सरकार कैसे दे सकती है? कैसे दे सकती है? तो इसलिए जातीय जनगणना कराना जरूरी है, ताकि जब बात उठती है हक की, हिस्सेदारी की, इस देश में आरक्षण की बात उठती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई है कि कौन सी जाति की कितना आबादी है, तो हम उनको आरक्षण कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहती है कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। जब इस देश के अंदर जब अगर विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं तो जातीय जनगणना कराइए और जो जितनी जातियां जिनकी आबादी है उस हिसाब से उनको भागीदारी दीजिए, तब विकसित राष्ट्र बन सकता है महोदय। इसलिए महोदय हम इस समान चर्चा पर एक बार सदन के माध्यम से सरकार से थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर। जी बैठिए हो गया आपका विषय हो गया। प्लीज जी मेहताब साहब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर। द बजट कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। रिपोर्ट जी आदरणीय मेहताब साहब। It is basically reflects the plan and program of the country and of the nation. So when something is said that it is only an accountant's job, I don't believe in that type of comment. There have been umpteen reasons to be apprehensive in 2023, more so while waiting for the budget. US Federal Reserve's unbridled aggression, rising cost of Ukraine and Russia, and China's COVID crisis, to name a few. Yet in the backdrop of like this government has decided to go bold and big on capex and chosen consistency in a world characterized by randomness and volatility. The Prime Minister has outlined the period from 2022 to 2047 as the period of Amrit Kal. It is a vision to make India a developed country during this golden phase. To realize this, India needs to rapidly invest in social infrastructure. This investment would need to come from taxpayers' money and not borrowings. India's tax to GDP ratio is still below the critical mark of 15%. India's gross tax to GDP, which was 11% in financial year 2019,
fell to 9.9% in financial year 20 and marginally improved to 10.2% in financial year 21-22. This is much lower when we compare ourselves with the emerging market economy, which is average of 21, and OECD, the average is 34%. Today, the country boasts more than 4.3 million crorepati's households, equivalent to 23 million consumers. They are spread all over the country. By 2047, if political and economic reforms have their desired effect, India has the potential to become the fastest growing economy in the world. This growth will not only make the Indian middle class the biggest income group in the country, but it will set to be major driver of economic, political and social growth. Finance Minister's full-fledged budget before next year's general election can be commended on many counts. I mention only three. For staying the course on fiscal consolidation, changing the composition of government expenditure in favor of capital as against revenue spending, and third, welcome move relating to personal income taxation. In turbulent time like this, a good budget can only be said is just a good beginning. The turmoil in the global economy is likely to continue as the impact of higher interest rates shows up in weaker demand for consumption and investment. Geopolitical tensions continue to disrupt every supplies and trade. As the resilience of the domestic economy gets tested by global headwinds, deft fiscal maneuvers is necessary, like they were this year. Now coming to the basics, sir, there is need for some answers. PM Kisan allocation is 13.33% lower as compared to budgetary estimate of rupees 68,000 crores made in 22-23. The revised estimate of 22-23 was reduced to 60,000 crores, no doubt, but in 21-22 an actual expenditure was rupees 68,825 crore, which was incurred on the PM Kisan. The figure is there for all of us to see. Should we believe that people have moved from farming to some other avenues for better? Or should we believe that they have been pauperized and have become daily wage earners? On MGNREGA, this generated an all-time high 389 crore person days of employment in 21-22. 363 crores in 21-22. Even this fiscal project is 290 to 300 person days will exceed the 265 crore plus generated in 29-20 and 2018 and 19. It is a demand-driven scheme. Whenever we make this point, always it is said it's a demand-driven. But here the figure shows how it has met. The budgeted amount this year is 60,000 crores. The question is, how realistic is the assessment? If the next southwest monsoon is normal and the non-farm economy timely recovers, MGNREGA may not require any additional funding. Till then, do we have to keep our fingers crossed? Coming to free food distribution scheme, and this is a scheme which we have all experienced, moderated income inequality in many states. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana played a key role
in keeping extreme poverty in the country at the lowest level. We didn't hear a single death because of hunger, because of this program. IMF report says extreme poverty was at the lowest level of 0.8% during the pandemic hit 2020. SBI study, State Bank of India study, has analyzed that several government transfer payments for the poor are adding rupees 75,000 to a household per annum. But I would like to draw the attention of the government to the design flaw, as ration records have not been updated since 2011 onwards. More than 40% of India's population is currently excluded from National Food Security Act. 40%. In many villages and slums, the most marginalized castes and communities are often without NFSA ration cards. However, states like Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, West Bengal and Chhattisgarh have either universalized or substantially expanded coverage with state cards. Sir, here I would like to remind the government about the Supreme Court judgment of last August, that is 2022, which has directed the union government to expand National Food Security Act coverage. Nothing has happened till now. Nothing has happened. And the answer that comes from the government is, let the census be over. Despite Supreme Court's direction, based on population projection, at least 100 million beneficiaries, especially children born in the last decade, are missing from the ration list. Where are they going to be? When are they going to be covered under NFSA? I come to another very important issue, where Odisha has been affected to a very great extent. I'll first put the figure of the budget, where food subsidy in Food Corporation of India under National Food Security Act, the revised estimate of 22-23 was 2,14,596 crores. This budget is 1,37,207 crores. There is a drastic cut. On food subsidy for decentralized procurement of food grains, 72,283 crores, which has come down to 59,793 crores. The government may say, because we have withdrawn Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, there is no need to procure more. And here actually the catch lies. The catch is, Odisha produces more than 72 million tons of paddy. And we purchase, FCI plus state government purchases the whole amount from the farmers, because to help the farmers at the MSP rate. Very few people keep rice for their own consumption. Other than that, the rest is purchased. What will happen there? Now already Odisha government is purchasing, but union government is not purchasing any paddy at all. No rice. Earlier, rice was being moved through Kerala to Tamil Nadu and also to the northeast. Now that is also not being done. Why this type motherly attitude to Odisha? That is the question which I would like to put. With this curtailment of or minimizing the purchase, who are the states which are getting affected? Odisha is the major state which is getting affected. And I would like to say, FCI is not taking parboiled rice. Corporation is not making payments to Odisha, though that is due in there. Sir, this budget is of 45 lakh
397 crores, and which is an increase of 7.5%. That is laudable, as I had said earlier. But what is the position? The position is, as I would say, there is a structural problem with our budget. More than 40% goes for the interest, to cover the interest. 30% goes on salary. So are we correcting it to a certain extent? No. Not much. We don't see any light from this budget. And I'm also reminded of another point, sir. You are aware, most of us are also aware. Are we at any point of time talking about Sahara India? 13 crore people had invested in that. What has happened? Doesn't government have any responsibility? We will say it is sub judice, Supreme Court is taking over, SBI is looking after it. But who is caring for these people, 13 crore people who had invested? No, not a single reply is coming from the government. Sir, coming to health issue, I would just deal with investors are 13, large number of people are affected. Sir, in a speech, Finance Minister has announced budget for health, not including research, will be roughly 86,175 crores, and that is 615 rupees for every person if I calculate it as per our population. This is a 2.7% increase from the previous year and lower than the rate of inflation. In real terms, the health spending has declined. Vaccinating to a single child against all childhood illness in our country costs rupees 1,600. A day of hospitalization in the public hospital is estimated 2,800 rupees. At a private hospital, it is more than 6,800 rupees. Rupee spending on health by the government gives more return than out-of-pocket or private spending by citizens. National Health Mission allocates less than 3%, that is 717 crores of rupees to non-communicable disease. For communicable disease, it is 3 times more, that is 2,178 crores. For reproductive and child health service, it is 9 times more, that is 6,273 crores. There is a need to rebalance, to pay attention to non-communicable diseases. On education, sir, share of education has fallen over the past 7 years, from 10.4% to 9.5%. This is stated in the state's in the economic survey. While expenditure on social service increased from 9,15,000 crores to 21,32,000 crores, the share of education has shrunk from 42.8% to 35.5% between 2015 and 2022. As a share of the GDP, the budgetary allocation for education saw a minimal gain, that is 0.1 percentage points, from 2.8% to 2.9% during this 7-year period. On taxation, sir, Finance Minister has made 5 announcements to reduce the tax burden. 4 pertain to the new regime. The last one is for exemption on leave encashment. But my question is the new tax regime attractive? Despite government's effort to simplify the tax system, the uptake of this regime is low due to the unavailability of common tax deductions and exemptions. Why should we have to run to the chartered accountant or a lawyer to understand how much tax I have to pay? Can't we make it simple? Even today, with this new tax regime, it is so cumbersome, it is difficult to understand. Very difficult to understand. Coming to the devolution of states, sir, the state share has never been close to 41%, though it has been announced by the Finance Commission, 15th Finance Commission.
The state share has never been close to 41% due to cess and surcharge imposed by the union government. Odisha government, our chief minister Navin Patnaik has been repeatedly writing to the Prime Minister that you share some of this, but that is falling on deaf ears. It keeps major chunk of taxes, and what we have been asking, Odisha is facing natural disaster year after. Our only demand is that you allow, and this we have discussed, the state government also has discussed with the Niti Aayog, with the Prime Minister, that you make Odisha a special focus state. Time is exhausting. For at least 3 years, if a natural disaster hits Odisha, allow or declare it as a special focus state where 90:10, that is the center and state share, for 3 years only, so that we tide over the situation and come up forward. Sir, on railways, I will be failing on my duty if I don't mention 2-3 words, because the rail minister is a member of this house representing our state. We find a significant feature. It has set aside nearly a quarter of its total capex outlay of rupees 10 lakh crores. The budgetary support amounts to 2.4 lakh crores. The goal is to raise the share of rail freight traffic from 27%, road transport is 64%, to 45% by 2030. Freight earnings are 2.5 times the passenger earnings. It is possible to improve on both counts. It's not unachievable. It is possible. The railways must adapt to become a transporter of FMCG, automobiles, and other high-value products for which last-mile connect is important. On the passenger side, upper-class travel should remain competitive vis-à-vis air and road travel. There is scope to raise both traffic and freight revenues. Despite pensions, can we imagine? Pensions of railway is over 25% of the total operating expenses of the railways. The budget numbers indicate 30,000 crores of rupees has been set aside for doubling of tracks. This was only 9,000 crores in 21-22. 32,000 crores to be spent on new tracks, that is 50% increase in 2 years. 40,000 crores on the rolling stock, which was only 8,000 crore last year. 8,000 crores for electrification. These are big numbers, very big numbers. The obvious question is, from my state point of view, how much is actually percolating to the state of Odisha, which has been denied railway development for last so many years. The obvious question, of course, is whether railway have the capacity for absorption and implementation for this expanded capital. Capital investment in the railway is overdue, no doubt, but it needs financial reforms, administrative reforms, and greater independence. Before concluding, sir, I have a small demand, as my friend from Kendrapada has just mentioned. The station is there, tickets are being sold, rail line is there, but it is not functioning. Passenger train should ply on that route. That is necessary. With these words, I conclude. Thank you. Shrimati Sangeeta Azad ji. धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे बजट 23-24 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आपका और आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बजट 23-24 के लिए हमारी पार्टी की मुखिया ने कहा है कि देश में पहले भी इस तरह के बजट आते जाते रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही है, किंतु वे सब बेईमानी हो गए। जब भारत का मध्यम वर्ग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और कोविड के चलते लोअर मिडिल क्लास बन गया। यह बजट भी पिछले वित्तीय वर्षों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। सरकारें अपने पिछले साल की कमियों को नहीं बताती हैं, उन कमियों के स्थान पर नए वादों की झड़ी लगा देती हैं।
सच्चाई यह है कि 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन हमेशा ही दांव पर लगा रहता है, जैसे कि इसके पूर्व के बजट के अभिभाषणों में था। यह बजट भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बजट की तरह ही है। महोदय, बजट में हर वर्ग के लोगों को डुबाने की कोशिश की गई है। जहां 5 लाख का इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, इसमें हर मध्यम परिवार को बहुत मदद मिलेगी। वहीं नई टैक्स रेजिम और पुरानी टैक्स रेजिम में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है कि किस टैक्स रेजिम में जनता को अधिक से अधिक फायदा होगा। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस अपने अभिभाषण में इस टैक्स रेजिम को अवश्य स्पष्ट करें। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना के बजट में 13,000 करोड़ की कटौती की गई है। हम सभी को ज्ञात है कि ग्रामीण अंचलों में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से आते हैं और इस योजना से संचालन से ग्रामीण में पलायन भी रुका है, साथ ही साथ रोजगार के सृजन भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधान संघ के सभी लोग आंदोलित हैं कि उनका समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है और जो भी कर्मचारी ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त किए गए हैं उनका वेतन भी वो अपने जेब से दे रहे हैं। महोदय, वित्तीय वर्ष 23-24 में सरकार द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विकास के लिए 3,943 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावासों की जरूरत है। खास तौर पे मेरे जनपद आजमगढ़ में जहां कई एकड़ की सरकारी जमीन अब भी खाली पड़ी है, मेरी सरकार से मांग है कि आजमगढ़ जनपद एक मंडल है जहां अभी महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय संचालन में आया है, जिसके चलते कई जिलों के छात्र यहाँ पठन पाठन करने आते हैं। इन छात्रों के लिए भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावास बनाए जाएं। महोदय, बजट में आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम की सफलता को सरकार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन तथा अन्य हेतु 500 ब्लॉकों का चयन करने के कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। मैं चाहती हूं कि हमारे जनपद आजमगढ़ के समस्त ब्लॉकों को इस योजना में शामिल किया जाए। महोदय, आजमगढ़ में महाविकास की योजना की रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं है, जिसके कारण से भूमि आवंटन नहीं हो पाया है। कौन सा ग्रीन लैंड है, कौन सी औद्योगिक भूमि है, कहाँ पार्क है, कहाँ क्रीड़ा स्थल है, कहाँ सरकारी जमीन है, कहाँ वनीकरण है, कहाँ सीवेज का प्लान है, इसका कोई मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं है। एडीए ने वर्ष 2031 के लिए महायोजना का मास्टर प्लान बनाकर 2021 में शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अमीर गरीब अपने आशियाने का सपना संजोए उस प्लान को लागू करने का इंतजार कर रहे हैं। औद्योगिक भूमि अलग नहीं होने के कारण कारपोरेट समूह और बड़े ब्रांड की कंपनियां जनपद में अपना रुख नहीं कर रही हैं, इसलिए यहाँ विकास और रोजगार पूरी तरह से ठप है। आजमगढ़ चारों तरफ से तमसा और घाघरा नदियों से घिरा हुआ है। हर साल बाढ़ से सैकड़ों गांवों में जान माल का नुकसान होता रहता है। मेरी सरकार से मांग है कि रिवर फ्रंट बनाकर नदियों पर बाढ़ का नियंत्रण कर सके और अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी पर कमर्शियल क्रूज का उद्घाटन किया है। मैं चाहती हूं कि उसे मेरे जिले की नदियों से भी जोड़ा जाए ताकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना जो नदियों को नदियों से जोड़ने का था उसे पूरा किया जा सके। आजमगढ़ को चारों तरफ से रिंग रोड के मास्टर प्लान बनाकर जोड़ा जाए और उसे मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज, फूलपुर, निजामबाद और बूढ़नपुर के तहसीलों से भी जोड़ा जाए। सर, हाईवे की बात करूं तो NH 233 पिछले 6 सालों से बनने को है, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। PMJSY की सड़कों की बात करूं तो सत्र खत्म होने को है, लेकिन सिर्फ 50% काम ही इस पर हो पाया है। सर, इन सरकारी योजनाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए। हर घर नल योजना जो सरकार ने अभी बात कही है, सिर्फ 30% अभी तक सर्वे हुआ है, बनने तो दूर की बात है। आजमगढ़ में डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, घरेलू औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जाए। इन्वेस्टर्स समिट 2023 जो भी हाल में ही उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी में आजमगढ़ को भी शामिल किया जाए ताकि आजमगढ़ में भी नए उद्योगों की स्थापना हो सके और जो जिले से पलायन होकर बड़े शहरों में भीड़ इकट्ठा हो रही है उसे रोका जा सके। आजमगढ़ का मंदूरी एयरपोर्ट
पूरी तरह से बन के तैयार है, उसे जल्द से जल्द संचालन में लाया जाए और एयरपोर्ट से तहबरपुर बाजार होते हुए निजामाबाद फरिया बाजारों से मोहम्मदपुर वाराणसी 4 लेन तक जोड़ा जाए। आजमगढ़ के इटौरा में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और चक्रपानपुर में मेडिकल कॉलेज होते हुए मेहनाजपुर वाया सिधौना तक पूरी सड़क को 4 लेन में तब्दील किया जाए, जिससे वाराणसी आजमगढ़ के लिए एक अन्य सीधा मार्ग बन जाए और ट्रैफिक बढ़ जाए, जिससे मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वालों की राह आसान हो जाएगी। वाराणसी लालगंज आजमगढ़ गोरखपुर की नई रेल लाइन का बजट 2022-23 में स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसका काम काफी धीमी गति से चल रहा है। इसमें तेजी लाई जाए और लालगंज में एक स्टेशन बनाया जाए, जिससे वहां के लोकल प्रोडक्ट अनाज फल सब्जियों को आयात निर्यात में आसानी हो सके और एक वंदे भारत ट्रेन को मेरे जिले में भी चलाई जाए। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी, काले मिट्टी का बर्तन का उद्योग और रेशम उद्योग, जिसमें मुबारकपुरी साड़ियां भी शामिल है, ऐसे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इनके बिजली के बिल को माफ किया जाए, इनको आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाए और इनको जीएसटी से मुक्त किया जाए और छोटे व्यापारियों को व्यापारिक क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाए। आजमगढ़ में लाल सोना कहे जाने वाली लाल मिर्च की खेती होती है, लेकिन इसके भंडारण और निर्यात का प्रबंध नहीं होने के कारण किसानों को इसका मूल्य नहीं मिल पाता है। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाए। सनई की खेती पहले हमारे यहाँ होती थी, लेकिन अब यह मृतप्राय हो चुकी है। अगर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तो जूट उद्योग यहाँ स्थापित हो सकता है और यह मृतप्राय खेती भी पुनः जीवित हो सकती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में श्री अन्न की बात कही है। आजमगढ़ की भूमि इस तरह के श्री अन्न, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, जौ जैसे अनाज शामिल हैं, इसके लिए प्रतिकूल है। मेरी सरकार से मांग है कि ऑर्गेनिक खाद, सरकारी समितियों में ऑर्गेनिक खाद और श्री अन्न के बीज उपलब्ध कराया जाए, जिससे आजमगढ़ में भी इस तरह के श्री अन्न की भारी मात्रा में खेती हो सके। आजमगढ़ में मत्स्य संपदा योजना के तहत, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि नदी तालाब का जाल बिछा है, इसको भी प्रोत्साहन करने के लिए वहां के उद्यमियों को इसका प्रोत्साहन किया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आजमगढ़ चारों तरफ से नदियों से घिरा है, गांवों को जोड़ने के लिए नदियों पर पुल बनाकर एक्सप्रेसवे और 4 लेन से जोड़ा जाए। सब 2 मिनट महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र से मात्र 40 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। आजमगढ़ बीच में होने के कारण पूर्वांचल का दिल कह सकते हैं। यह दोनों क्षेत्र से बड़ा जिला है, जिसका विकास पूरी तरीके से अधूरा है। अमृतकाल का यह समय और यह बजट लोगों के उत्सव मनाने वाला है, लेकिन अगर आजमगढ़ को इसमें स्पेशल पैकेज दे दिया जाएगा तो आजमगढ़ के लोग भी इस अमृतकाल का उत्सव मना पाएंगे। और अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। सर, देश के साथ साथ आजमगढ़ की जनता भी बहुत उम्मीद से माननीय वित्त मंत्री की तरफ और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद लगा के बैठी है कि इस अमृतकाल के बजट में आजमगढ़ को एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, जिससे हम सभी लोग अमृतकाल का उत्सव मना पाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। सर, मैं आपका मनपूर्वक आभारी हूं। मैं इतना भाग्यवान हूं कि तीसरी बार इस क्षेत्र में, इस बड़े हाउस में बात करने का मौका मुझे मिला है। मेरी भगिनी जो मेरे साथ झारखंड में गवर्नर थी, अभी राष्ट्रपति बन गई। मेरी पहली एक भगिनी प्रतिभा जी, वो भी मेरे साथ पड़ी हुई है, और रामनाथ जी भी गवर्नर थे। इसलिए मैं भाग्यवान समझता हूं। और मेरी भाषा जो आगे मैं मराठी में बोलूंगा तो भी चलेगा, हिंदी में भी बात करूंगा। सतारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें मैं आता हूं। स्वातंत्र के पूर्व काल में जो 3 जिले सब भारत में प्रसिद्ध थे लड़ने के लिए, उसमें क्रांतिकारी नाना सिंह पाटिल जी थे। और मेरी एक कामना है, मनु तांबे जो झांसी की रानी कहती है, उसका मायका भी मेरे क्षेत्र में है। तो मैं चाहता हूं, मेरी मांग भी है कि मिलिट्री भर्ती के लिए कुछ एक विद्यापीठ बनाए, जो मिलिट्री एकेडमी जैसे एनडीए खड़गवासला में है और आईएमए जैसे देहरादून में है, वैसे अगर कोई मिलिट्री एकेडमी बने सेंटर की, और महिलाओं के ट्रेनिंग के कुछ जबाबदारी लेंगे तो अच्छा रहेगा। आता म्हणजे मराठीत बोलतो।
महाबळेश्वर पाचगणीच्या ज्या शाळा आहेत इंग्रजी माध्यमाच्या, त्यांना संपूर्ण भारतातून तिथे आपले पालक आपल्या मुलांना पाठवतात. महाबळेश्वर एक थंड हवेचं उत्तम ठिकाण आहे. हे दोन्ही जंगलाच्या प्रदेश असल्या कारणानं एनजीटी नॅशनल ग्रीन ट्रायबलची बरीचशी बंधनं आहेत आणि त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळामध्ये 150-200 वर्षापूर्वी जे क्षेत्र निर्माण झाले आहे त्या क्षेत्राचा जर विकास झाला नाही तर रोजगार जोपर्यंत मिळत नाही, घोडेवाले, खेळणीवाले, काही फळं विकणारे, लोकांना धान्य पुरवणारे, लोकांना रिक्षातून नेणारे, सायकल रिक्षा नेणाऱ्या लोकांना पोटापाण्याला उद्योग मिळत नाही, तोपर्यंत रोजगार मिळावा, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हे बजेटची एक आपल्या खासियत आहे. आणि त्यामुळं माझी आपणास विनंती आहे की एनजीटीच्या माध्यमातून भारतीय आणि महाराष्ट्र सरकारनं एकत्र बसून महाबळेश्वर सारख्या एका थंड हवेच्या ठिकाणाची जर विस्तार केला नाही तर भविष्यात ते तसंच राहील आणि म्हणून पोटापाण्याचा उद्योग होणार नाही. आणखी माझं म्हणणं आहे की कोकण आणि महाराष्ट्राचा पश्चिम विभाग जोडण्याकरता पोलादपूर ते सुरूर एक रस्ता आहे. साधारणतः शनिवार रविवार जेव्हा सुट्टी असते किंवा उन्हाळ्यात सुट्ट्या जेव्हा असतात त्यावेळा अलीकडून पलीकडे जायला एकाच गावातून कमीत कमी 3 ते 4 तास लागतात, जोपर्यंत रस्त्याचे रुंदीकरण होत नाही. आपने संभवतः सूचना नहीं दी होगी, अभी दिए तो इंटरप्रेटर ने हिंदी में बोलिए या अंग्रेजी में बोलिए, सुनाई नहीं था. प्लीज. मराठी का इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है तो सूचना न होने के कारण हिंदी में बोलूं मैं? हिंदी या अंग्रेजी में बोलिए जी प्लीज. मैंने कल भी इच्छा प्रकट करी थी लेकिन हुई नहीं, इसलिए मैं हिंदी में बात करूं. शुरू करूं कि जी करें. जो झांसी की रानी मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये जिसने आवाज उठाई थी, उस झांसी की रानी मेरे कार्यक्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, उस गांव से आती है. तो मैं चाहता हूं कि भारत में एक ऐसी मिलिट्री एकेडमी बने जिस मिलिट्री एकेडमी का नाम मेरी झांसी नहीं दूंगी के नाम झांसी की रानी मिलिट्री एकेडमी हो, क्योंकि इंडिया जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी वो पूना में है और IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है. वैसे अगर एक एकेडमी बन जाए और महाराष्ट्र में जिधर सातारा में अजिंक्य तारा के पार्श्वभूमि पर अगर बने तो बड़ा अच्छा होगा. महात्मा फुले की पत्नी जो सावित्रीबाई थी, जिन्होंने पहले महिलाओं को शिक्षण देने का कार्य किया पूना में भिड़ेवाड़े में, उनके नाम से महिलाओं को शिक्षण देने की सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने, क्योंकि एक विद्यापीठ पूना है उसका नाम सावित्री रखा है. लेकिन अगर महात्मा फुले एक डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, शाहूनगर डिस्ट्रिक्ट बन सकता है और अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, तो महात्मा फुले की पत्नी सावित्रीबाई इनके नाम से महिलाओं की एक शिक्षा की एक विद्यापीठ बने तो बड़ा अच्छा होगा. सातारा में स्वर्गीय यशवंतराव चौहान जो डिफेंस मिनिस्टर थे, बाद में अर्थमंत्री भी थे, उनके ही कॉन्स्टिट्यूशन में आता हूं और बजट की स्पीच में बोलने की मुझे मौका मिला है, इसीलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं. एक बात करनी चाहिए, जो सातारा सैनिक स्कूल है वो 2 जून 1963 में आदरणीय चौहान साहब ने निकाला है, लेकिन आज उनमें महिलाओं की संख्या 10 खाली है, बाकी बच्चे जो पढ़ते हैं. लेकिन जो बच्चे हैं वो किसान के, कामगारों के और शिक्षा देने वाले शिक्षण के हो रही है, तो उनको फी जो है वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए फी अभी बन रही है. तो अगर फी के अगर कुछ सहूलतें दी जाए तो बहुजन समाज के विद्यार्थी मिलिट्री एकेडमी जाकर कुछ अपना नाम कमाएंगे और आगे चल के जो आजकल मिलिट्री में जो जगह खाली पड़ी हुई है वो भरने का कुछ मौका उनको मिले. आज देखा मैंने पंतप्रधान आवास योजना का कम से कम 30-35 हजार घर बनाने का अर्जी मेरे डिस्ट्रिक्ट में आई थी, लेकिन जब तक कितनी जगह है, कैसे घर बना सकते हैं? काली मिट्टी में घर बनाना है, मुरुम में घर बनाना है और जहां खदाने हैं वहां मुरुम बनाना है, तो उसका अगर एस्टिमेट जब तक बनाते नहीं है तब तक बनाना मुश्किल है. एक साथ 1.5 लाख 2 लाख ऐसा करके कभी घर बनेंगे नहीं. तो जगह कितने अवेलेबल है, कितने अर्जा है, कितने लोगों को जगह दे सकती है, उसका एस्टिमेट क्या हो सकता है, ये नहीं होता तो सालाना कम से कम 1000-1500 घर बनाकर ये प्रावधान जो है कभी बन नहीं सकता. अगर अभी मैं कल जब स्पीच सुन रहा था
तो 15 साल के बाद जो व्हीकल हो गए उनको निकालना चाहते हैं। संख्या क्या होगी, कहां वो लेके रखेंगे, डंपिंग ग्राउंड कहां होगा, उनको तोड़ने की क्या व्यवस्था होगी, उसका मेल्टिंग कैसा होगा, होने के बाद जो बनेगा लोहा उसका उपयोग क्या करने वाला है, उसका जब तक आप प्लानिंग करेंगे नहीं तब तक ये गाड़ियां रास्ते पे आएंगी और जो छोटे रास्ते हैं वो फिर से छोटे बन जाएंगे। इसीलिए जब तक आप ये स्क्रैप किया हुआ मटेरियल डंपिंग की कुछ व्यवस्था करते नहीं तब तक ये होगा नहीं। इसीलिए पूना जैसा शहर है, कोल्हापुर शहर है, नासिक शहर है, महाराष्ट्र में जितने बड़े बड़े शहर है उसमें और एक प्रावधान है कि जिनके पास कभी गाड़ी के बैठने का शौक ना था उन लोगों के पास अब गाड़ियां हैं तो उनके अगर कुछ सहूलियत मिले थोड़ा सा उनको इन्फॉर्म करके कि 1 साल में आपको सहूलियत दी जाती है। और नई गाड़ी लेने के लिए अगर नई गाड़ी लेते हुए कुछ उसको फाइनेंस असिस्टेंस मिले और 1-2 साल का जो रजिस्टर का खर्चा होता है वो भी मिले तो लोगों को कोई सहूलियत मिलेगी और अपनी पुरानी गाड़ी जो देश को अभी हवा में तकलीफ होती है इसलिए देने के लिए लोग राजी होंगे। सहूलत अगर मिलेगी तो अच्छा होगा। व्यक्तिगत कर भरने के लिए आपने जो सहूलत दी है इसका मैं जरूर आभारी हूं, लेकिन रिटर्न भरना और रिटर्न भरने के लिए सीए के पास जाना, वकीलों के पास जाना, उनकी फी देना, ये लोगों को परिवर्तन नहीं। और जितना भरा है उसका वापस आने के लिए मुझे पैसे दो मैं करके दूंगा, मुझे पैसे करके दूंगा, पैसे देते हैं हम ज्यादा और आय जो कम रिटर्न है वो आता नहीं, इसलिए उसकी अगर कुछ व्यवस्था कर चले। मेडिकल कॉलेज आपने जो निकाला है बड़ी अच्छी इसकी है, लेकिन इतने मेडिकल कॉलेज निकालने के बाद उसकी गति क्या है, कंस्ट्रक्शन चला है कि नहीं, और मेडिकल कॉलेज होने के बाद उनके लिए जिन लोगों को आपने वहां पढ़ाने के लिए और मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए मनुष्य बल है उसकी क्या व्यवस्था की है, ये जब तक अपने को पता नहीं चलता तब तक ये मेडिकल कॉलेज चलेंगे नहीं। अभी एक स्वच्छता के बारे में मलबा निकालने के लिए जब तक यंत्रणा नहीं होती, क्योंकि खाली मैन होल में अगर लोग छोड़ेंगे तो वायु से वो प्रदूषित होकर कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। जब तक मशीनें नहीं आती है और मशीनों लेने के लिए सहूलियत ही नहीं जाती तब तक म्युनिसिपैलिटियां हो, पंचायत हो या जिला परिषद हो, उनके लिए अगर कुछ व्यवस्था हो तभी ये हो सकता है। अभी बीएसएनएल के टावर के बारे में मैं आभारी हूं। दुर्गम भाग में मेरे क्षेत्र में टावर मिले हैं, लेकिन जब तक उधर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं और खड़े करने की व्यवस्था नहीं है तब तक ये बनने वाला नहीं। कई आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासन पूरे करने के लिए अगर 5 साल लगते हैं तो ये चुनाव से वो चुनाव तक खाली आश्वासन ही दिए जाते हैं और लोगों के झोली में कुछ मिलता नहीं। इसीलिए फटी हुई झोली में कुछ डालना ये गलत तरीका है। इसलिए जब तक आप पूरा प्लान करके और एक काम करना चाहिए, गए बजट में जो आश्वासन दिए हैं वो आश्वासन पूरे हुए या नहीं हुए और आगे करके क्या करना है, इसीलिए जब तक करते नहीं तब तक ये आश्वासन देना उचित नहीं है। पूरे देश में मैं सिक्किम में कभी राज्यपाल के पद पे रहा हूं। ऑर्गेनिक की जो बात है, अगर भारत का एक राज्य जनवरी 1916 में पूरे विश्व में अगर ऑर्गेनिक हो सकता है तो एक ही बात की पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया। एक की अगर किलो केमिकल खाद या उर्वरक अंदर लाया जाए तो उसको 25,000 का जुर्माना और 3 महीने की सजा, ये ऑर्डिनेंस निकालकर वो बिल में करके जब हुआ तो देश का एक सिक्किम राज्य जो है हुआ। ऐसे कुछ तरकीबें निकाले कि जिसकी वजह से लोगों को प्रोत्साहन मिले और ऑर्गेनिक से जो चीजें बन रही है उसके खपत के लिए भी अगर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो तो हो जाएगा। मुझे अभी एक यशवंतराव चव्हाण जी ने जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो सब के बच्चों के लिए जात जमात इसका चिंतन नहीं करते हुए जिनकी आमदनी कम है उन पालकों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था में सहूलत दी है। 1200 रुपए तब जो इनकम था जिनका, उनके बाल बच्चों को भी सहूलतें दी गई। आजकल 1200 नहीं, करे 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, लेकिन जात जमात पे एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा तभी भी सहूलत है। लेकिन हमारे जो छोटे भाई किसान भाई है, कारीगर है,
और देहात में रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को सहूलियत देना चाहिए। और बड़े होकर उन्होंने 1 या 2, 3 लोगों को सहूलियत देकर पढ़ने की वजह से जो शिक्षा पाई है, उसके लिए उनको भी आधार देना चाहिए। मुझे मराठी में बोलने की थी, लेकिन मराठी में बात नहीं कर सका। हिंदी में मेरे बात करने के लिए मुझे जो आपने संधि दी, इसलिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये बजट में जो अच्छी चीजें की है, उसके लिए मैं बजट का प्रोत्साहन भी देता हूं, सराहना भी करता हूं। जो बातें कम हुई है और होना चाहिए, ऐसी उम्मीद करता हूं वो आप करेंगे, ऐसा लगता है। इस जवान के साथ मैं मेरे वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। श्री M.K. राघवन जी। Sir, to allow me this occasion to participate on the discussion of Union Budget 2023-24. First of all, I strongly object this year's Union Budget 23-24. Being the last budget of this government, I had high hopes. Unfortunately, after presentation of this budget, I lost all hopes. So I wish to bring in few suggestions for your consideration and necessary actions. Sir, what happened Manrega in this budget? Sir, Madam Minister is really neglecting the rural population. This year's budget clearly establishes this. The contribution to the Manrega was monumentally reduced to 60,000 crores. So what is the result? By slashing funds to Manrega, government is bringing in a disaster into lives of our common men. This world's largest social security legislation is the brainchild of our government in 2005, led by UPA. Sir, but unfortunately we feel sad that Manrega is being totally neglected by the union government. My suggestion is that the minimum wages under Manrega must be increased at least ₹400 per day, and timing should be reduced, giving more thrust to physical asset creation by channeling these resources to agriculture and related activities. I humbly request Finance Minister to enhance the funds for Manrega at least ₹1,25,000 crores to ensure 100 days of employment in a year. Sir, Madam Minister, she's totally neglected my constituency Kozhikode as well as entire Kerala. Of the 2,40,000 crores earmarked in the budget for railways, Kerala is expected to get only ₹2,033 crores. So this is very minute amount for our state. I wish to bring to your urgent attention that the file for redevelopment of Calicut railway station has been pending with RLDA for years now. It is really sad that there is no provision for Faro-Kangalipur railway line and Guruvayur-Tirunavai railway line projects in this budget. We request you to provide Vande Bharat train connecting Calicut-Bangalore, Calicut-Trivandrum and Calicut-Chennai, along with extension of train 16511 22 connecting Kannur, Yeshwantapura to Calicut, and to provide us with more trains to Malabar region. Sir, the most important issue I have to raise today before you is regarding setting up of AIIMS at Calicut, Kozhikode. For the past 8 years, I have been requesting Honorable Prime Minister and Health Minister for sanctioning AIIMS at Kozhikode. Sir, land acquisition has been already completed for setting up of AIIMS at Kinalur, Calicut. I request Finance Minister to provide fund allocation for setting up of AIIMS and to expedite the same. Sir, Calicut Airport is one of the highly profitable and the only airport owned by Airports Authority of India in Kerala. Sir, however, Calicut Airport has been totally neglected in this year's budget. We request you to kindly provide sufficient funds for expansion and extension of Calicut International Airport. Sir, regarding Bepur Port, I have requested this House to upgrade Bepur to major port and improve connectivity to Lakshadweep Islands many times. Unfortunately, no initiative has been taken in this regard. My humble submission before you,
kindly provide us with the funds under Sagarmala to develop Bepur port and also for Bepur Malapuramba road connectivity. Sir, I thank the government of India for including Bepur under the Swadesh Darshan scheme and request to allot more funds for tourism-related activities for Calicut. Sir, regarding setting up of a Kendriya Vidyalaya at Ulliyeri, Calicut, I request your urgent intervention. Sir, I appreciate the Honorable Finance Minister for increasing the duty on compounded rubber. But my only concern is whether existing international agreements entered by us will permit this. I seek a clarification on the same. I request you to enhance the allocation to rubber board and spices board. It is disappointing that there is nothing in the budget for the coconut farmers of Kerala. So I request the Honorable Finance Minister to provide more funding for coconut board to ensure procurement of coconut from farmers through NAFED. Sir, subsidies to FCI under National Food Security Act has been cut drastically to 1,37,207 crores from 2,14,696 crores of the revised estimates of 2022-23. Sir, this can adversely affect large number of the people of our country and the functioning of PDS system. So my humble request is provide more funds and to take necessary steps to strengthen PDS system of our country. Sir, our country has the rich tradition of protecting the minorities. However, for the past few years, sir, there is total neglect towards minority communities. I request Honorable Minister to increase the amount allocated for minorities to at least 10,000 crores. So I am not mentioning income tax since Madam has clearly made it clear that the intention is to move towards new tax regime. In doing so, our people will lose large amount of accrued benefits. There is a lack of clarity amongst the minds of taxpayers regarding new and old tax regime. So my request is to bring in a unified income tax structure by retaining the welfare provisions of the old tax regime. Sir, I request the Finance Minister to grant the pending GST dues to Kerala immediately. Madam, otherwise, people of Kerala will not even be able to breathe fresh air, since it may also be taxed by the state government in future. Sir, we are very much worried at the twin problem of rising inflation and unemployment, which this budget totally failed to address. Since time allotted is limited, I am concluding my speech. I have humble submission before this government. The union government is duty bound to respect fiscal federalism. Hence, I request you to consider my suggestions, which I proposed before this House. With these words, I conclude my speech. Thank you, sir. Thank you very much. Shri Sudhir Gupta ji. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस शानदार बजट के समर्थन में बोलने के लिए मौका दिया है। मैं कहना चाहूंगा, फूल इसलिए अच्छे हैं कि खुशबू का पैगाम देते हैं। फूल इसलिए अच्छे हैं कि खुशबू का पैगाम देते हैं, और बजट इसलिए अच्छा है कि जनता के मन के भाव को जान लेते हैं। और वित्त मंत्री जी इसलिए अच्छे हैं कि इस जनप्रिय बजट में हम आपके परिश्रम को पहचान लेते हैं। अमृतकाल का यह बजट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कठोर परिश्रम, अनुशासित जीवन शैली, दृढ़ इरादों का, संकल्पों को पूर्णता तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति का, गरीबी से मुक्त हो सके ऐसे प्रयासी भारत का, दुनिया को दिशा दे सके ऐसे प्रभावी भारत का, आर्थिक रूप से सबल भारत का, सामरिक रूप से साहसिक भारत का, सांस्कृतिक रूप से मार्ग प्रशस्त करते ऐसे भारत का, या यूं कहें सब विषयों और सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना, ऐसे प्रतिबद्ध भारत का प्रभावी बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित ही
भारत के स्वर्णिम काल का यह अमृत संदेश है। इतिहास में यह काल 2014 से आगे का गोल्डन ईरा होगा, स्वर्णिम काल होगा, अमृत काल होगा। हाँ, वो नरेंद्र ही तो होंगे जो समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत परोसने में लगे हैं और स्वयं के हिस्से में मंथन से निकला विष गले से लगाया है। मंथन से निकली अन्न, फल, फूल आपकी थाली तक व तिरस्कृत वनस्पति स्वयं के सर लगाया है। समाज की असमरसता का नाग गले लगाकर समरसता का भाव फैलाया है। तभी तो अमृत काल आया है, अमृत बजट आया है। अमृत काल की बेला में G20 की अध्यक्षता आई है। घर में खुशियां लाई है, मंगल गीत हैं, हाथों में मेहंदी रची है और द्वार पर रंगोली है। स्वागत के ताशे बज रहे हैं। देश 2047 के सुखद भारत बनाने में आपके बजट के साये में संकल्पित खड़ा है। युवा पढ़कर रोजगार दे सके ऐसा बनने में अड़ा है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कुटीर उद्योगों के प्रेरक श्रृंखला लिए खड़ी है। स्वास्थ्य सुधार के बड़े अभियान हैं तो आधुनिक भारत के निर्माण की दृढ़ संकल्पना है। माननीय सभापति जी, निश्चित ही भारत बदल रहा है। तभी तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI कहता है भारत में 415 मिलियन लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट भी कहता है कि भारत अति गरीबी से मुक्ति के द्वार पर है। माननीय, गरीबी से मुक्ति मिले इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ से अधिक आबादी को निशुल्क राशन मिले ऐसा सुदृढ़ प्रबंधन किया है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने 2,05,764 करोड़ का विशाल प्रबंधन किया है। जनधन खाते, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस चूल्हा, आयुष्मान कार्ड, मुद्रा बैंकिंग, स्वनिधि योजना, स्व सहायता समूह बजटीय ताकत बनी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, PM किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास, स्वामित्व योजना, अनगिनत योजनाएं। माननीय सभापति जी, मैं एक संदेश जो मेरे संसदीय क्षेत्र के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भारत सरकार ने प्रशस्ति पत्र दिया था, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। पुरस्कृत करने का अवसर था 5,000 परिवारों के बीच देश की बजटीय धारणाओं से निकली योजनाओं को घरों तक पहुंचाना। उसमें से एक वाकया है। एक अम्मा है जिनकी उम्र 80 साल है। जन्म आजादी के पहले हुआ। जन्म की खनक बाल मन में कानों में थी कि देश आजाद हुआ है। 5-6 वर्ष की उम्र में यह खनक उनके कानों तक पहुंची कि मैं आजादी में सांस ले पा रही हूं। बड़ी हुई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, दादी बनी। बुढ़ापे का एक ऐसा दौर आया, तब तक घर के ऊपर कोई आश्रय छत नहीं थी। जब भारत सरकार के अधिकारी जिले के अधिकारियों के साथ उस अम्मा के निवास पर गए तो वो खुश थी क्योंकि प्रधानमंत्री आवास उन्हें मिला था। शाम का समय था। अधिकारियों ने पूछा, अम्मा कैसा लग रहा है? अम्मा ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि जीवन के प्रारंभ में आजादी देखी थी, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे को पक्का मकान मिला है। आप चाय पिएंगे क्या? अधिकारियों ने उस अम्मा का चाय पीने का आग्रह स्वीकार किया। बैंक की योजनाओं से उनका बेटा जीवन में पहली बार अपनी बकरी हो सके लेकर आए थे। बकरी का दूध निकाला, घर के अंदर गए, उज्ज्वला गैस के चूल्हे पर और चाय बनाई। शाम का समय था, अंधेरा ढला, उजाला योजना का बल्ब जलाया, तब उस घर में पहली बार आजादी आई। ये संदेश है माननीय सभापति जी बजट की योजनाओं का। आजादी की चमक प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में बजट की खनक कैसे 80 वर्षीय अम्मा के घर तक आती है, ये शायद बिना मकसद यात्रा करने वाले यात्री के समझ से बाहर है, या यूं कहें बिना मकसद की जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल का पता न लिखा हो, वो कहीं नहीं पहुंच सकता है। ये भटका हुआ यात्री एक बार मेरे संसदीय क्षेत्र में आ गए, मंदसौर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था माननीय सभापति जी, लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान जी के कठोर परिश्रम से, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों के सतत लगन से
मध्य प्रदेश में दृश्य बदला है। लेकिन इस भटके हुए यात्री को कुछ पता नहीं था। मकसद विहीन यात्रा जहर, भ्रम, झूठ, निर्लज्जता की हद तक बोले। माननीय सभापति जी, परिणाम क्या हुआ? अनगिनत संस्थाओं में आग लगी, सैकड़ों गरीब किसानों के वाहन जला दिए गए, मजदूरों के बेटों ने बैंकों से कर्ज लेकर ट्रकों और वाहनों को खरीदा था, महोदय आग के हवाले। परिणाम गोली चालन, लोगों की मौत, भयानक बर्बादी। मकसद विहीन यात्रा को जनता ने निरस्त कर दिया, क्षेत्र ने अस्वीकार कर दिया। माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के निकट राजस्थान का चित्तौड़ है। वहां पर माता रानी है, एक भंवर माता। अब भंवर यानी मधुमक्खी, हनी बी। वह माता है जो भंवर की पूजा आराधना होती है। ये भटके हुए यात्री जब उधर आए थे, मकसद गलत लेकर आने वाले के ऊपर मनुष्य तो क्या देवता भी कैसा प्रसाद और आशीर्वाद देते हैं, ये रिकॉर्ड पर है। 1 लाख से अधिक भंवर इस भटके हुए यात्री के ऊपर घिरे, पटरी पटरी दौड़े। ये दौड़ते हुए का दृश्य भी है, रिकॉर्ड पर भी है। ये भटकाव, ये छलाव दुनिया को क्या छल सकता है, ईश्वर भी जानता है। पापों का घड़ा भर जाता है। माननीय सभापति जी, अभी मैं सुन रहा था तो 2-3 राज्यों के विषय में, हालांकि मेरा कमेंट्स करने का उद्देश्य नहीं, मगर 2 वरिष्ठ जन बोल रहे थे, एक बंगाल से थे, एक बिहार से थे। अब बंगाल और बिहार की व्यथा, वो कहानी उन्होंने सुनाई, बड़ी दर्द भरी थी। ये परिलक्षित हो रहा था कि वो दोनों सांसद साथी उन सरकारों से बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे कि उन्हें राशि नहीं मिली, उन्हें बजट नहीं मिला। तब मैंने रिकॉर्ड उठाकर देखा तो इस बजटीय संरचना में केंद्रीय कर और शुल्कों से बिहार को 1,02,737 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय कर और शुल्कों के हिस्से की बिहार को जानी है, और 76,843 करोड़ रुपए की विशाल राशि बंगाल को जानी है। मेरे मध्य प्रदेश को 80,183 करोड़ की राशि मिलनी है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस राशि के साथ साथ अपने परिश्रम से उस प्रदेश को सुदृढ़ करने के लिए अभी तो बहनों को लाडली बना रहे हैं। हमने बेटियों को लाडली बनाया है, हमने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, हम शिकायत लेकर नहीं आए। ये बात इस समस्या को इंगित करती है। इन दोनों सांसद भाइयों का बंगाल और बिहार में अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं, जो 80 करोड़ लोगों को राशन, जो गैस का चूल्हा, जो पक्के मकान, और इतनी बड़ी बड़ी राशि 1,02,000 करोड़ की विशाल राशि का उपयोग नहीं कर पाए, इन्होंने सिद्ध कर दिया। इसलिए मैं तो जनता से यही आग्रह करूंगा कि दोनों भाइयों का स्वागत करें कि अपनी अपनी सरकार की पोल खोल कर चले गए। पापों का घड़ा भरता नहीं है। योजनाएं आती है, नीचे कैसे दुरुपयोग होता है, और कैसे भोली भाली जनता को ऐसे तेज तेज भाषण देकर लोग चले जाते हैं। मैं पिछले बार गलती से कह दें या जनता के भ्रम से कह दें, मेरे मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, कमलनाथ उसके प्रमुख हो गए। वादे क्या किए थे? यही यात्री थे। इन यात्री ने क्या वादा किया था? इन्होंने कहा था कि 1, 2, 3, 10 तक गिनना, तब तक सारा कर्जा माफ। भाई साहब वो आज भी खड़े हैं। और क्या बोले? हर खेत के पास में प्रोसेस प्लांट लगा दूंगा, ये रिकॉर्ड पर है। हर खेत के पास प्रोसेस प्लांट लगा देंगे ताकि आपका और खेती का उत्पादन सीधा पैक हो जाए। हर गांव में एक मोबाइल का फैक्ट्री होगा अपने गांव के नाम से, मेड इन इंडिया। ऐसा अपना गांव, हमारा वहां पिपलिया मंडी था, बोले मेड इन पिपलिया मंडी, मेड इन मंदसौर, मेड इन नीमच बना दूंगा। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा, अभी ढूंढ रहे हैं, इस चुनाव में ढूंढ लेंगे वो। सामाजिक पेंशन 3 गुनी कर दूंगा। बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए दे दूंगा। दूध पर 5 रुपए का बोनस दूंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की उन बहनों को बड़ी मुश्किल से गांव में लोग एकत्रित करके और रोजगार के लिए जुटाते हैं, उन बहनों से कहा तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा। 60 वर्ष से बड़े पत्रकार भाइयों को कहा तुम्हें सहायता देंगे। सफाई कर्मचारियों से कहा तुम्हें नियमित करूंगा। नेताओं से कहा एक विधान परिषद बना दूंगा। बेघरों से कहा कि तुम्हें 2.5 लाख रुपए अतिरिक्त दूंगा। और लड़कियों से कहा कि 2 पहिए के वाहन दूंगा। ये पोस्टर लगे हैं, ये घोषणा पत्र है। वो सरकार बन गई थी, वो सरकार रही, वो तो बाद में सिंधिया साहब को समझ में आ गया
कि ये भटका हुआ यात्री है, इसलिए सरकार वापिस शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में है। क्या करें माननीय सभापति जी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, आंकड़े ले आते हैं, परसेंटेज बताते हैं। गांव का व्यक्ति परसेंटेज में बात नहीं करता हो तो उसे पता पड़ना चाहिए कि मुझे मिला क्या है। नेहरू की बात करते हैं, पुरानी पुरानी बातें करते हैं। मैंने भी सोचा कि नेहरू जी ने कुछ तो किया होगा। मैं जब कमेटियों में गया तो मुझे समझने का मौका मिला कि कृषि पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना अनाउंस की थी, लेकिन अनाउंस करते ही बड़े बांध लाए। लेकिन माननीय सभापति जी, 30 साल से अधिक ब्रिटिश इंडिया ने बड़े बांधों को बनाने के लिए मैपिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग वर्क, टेक्निकल वर्क अपडेट करके महामहिम के हाथ में दिया था। लेकिन उस दौर में जितनी योजनाएं थी उसमें सरदार पटेल भी थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर जी की छाया छत्र भी थी, बाबू जगजीवन राम जैसा विशाल हृदय का व्यक्तित्व भी था, राम मनोहर लोहिया जी का पीछे से कांग्रेस को दी पृष्ठभूमि भी थी। इन सब चीजों को लेकर बातें तो बहुत कर ली। और अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की 51 से 56, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास, आप पहले भी कह रहे थे, आज यात्री फिर भटक कर कह रहे हैं। 56 से 61 तक समाजवादी समाज की रचना, बहुत बढ़िया। 61 से 66 तक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। 66-67 में मैक्सिको के नॉर्मन बोरलॉग और भारत के स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति पर काम किया था। 67, 68, 68, 69 और 69-70 में बोले स्थायित्व के साथ विकास, और 71 में गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ। हम मनोज कुमार भी प्रभावित हो गए माननीय सभापति जी। उन्होंने एक पिक्चर बना लिया, रोटी कपड़ा और मकान। अरे बड़ा सबको लगा कि भाई और क्या चाहिए, रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, छप्पर फाड़ कर वोट दे दिया। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, 80-85 में गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि की बातें आपने इस सदन में कही, दुनिया के सामने कही। 85-90 में उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के अवसर, और 91 में आर्थिक सुधार, मानव संसाधन विकास पर 92-97 पर माननीय सभापति जी देश को समझ में आया, ये भूल छलावा और भटकावा समझ में आया, तब नीति आयोग सामने आया। और नीति आयोग में थिंक टैंक है, अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की बात है। इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं और परिणाम सतत विकास लक्ष्य, शहरी सूचकांक डैशबोर्ड सामने आया, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स सामने आया, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक सामने आया, अटल नवाचार मिशन आया, नवाचार के क्षेत्र में स्टार्टअप और विश्वसनीय मदद और विशेषज्ञता प्रदान करने की एक रणनीति सामने आई। देश समझ चुका है। माननीय सभापति जी, कितने बजट और कितने पैसे की बात करें, हम स्वास्थ्य की ही बात कर लेते हैं। हम स्वास्थ्य पर ही बात कर लें तो आज 86,200 करोड़ का विशाल बजट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहन निर्मला जी ने दिया है। धन्यवाद दूंगा। ये 12-13 में 37,000 करोड़ था। आज से ये परसेंटेज में बताते हैं उलझाने के लिए। ये गरीब आदमी का सिस्टम समझते हैं कि इसे मैं आए थे और उन्होंने 2 लाख से अधिक जनता को संबोधित करते हुए कहा था, मैं जानता हूं स्वास्थ्य की सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है और लोग अहमदाबाद चलकर आते हैं, मेरे पास भी आते हैं और यहां स्वास्थ्य की सुविधा सुधरनी चाहिए। आज मैं खड़े हुए फोरम पर कह रहा हूं, आज 14 और 22, मुझे ना आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं, मेरे वहां की जनता खुश है। हम आश्चर्यचकित है कि कैसा स्नेह होता है सरकारों का। मेरे संसदीय क्षेत्र में माननीय सभापति जी मेडिकल कॉलेज आए, कितना, मेरे यहां 3 जिला मुख्यालय हैं, तीनों जिला मुख्यालय पर 3 मेडिकल कॉलेज, एक बनकर चालू हो गया, एक बनकर चालू हो गया। दोनों इतनी हाइट पर आ गए कि मनसुख भाई यहां बैठे हैं, मांडविया जी, मैं तो बधाई धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दूंगा, नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री जी थे उनको भी दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा और माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद बधाई दूंगा। कमाल कर दिया साहब। मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज, हम सोच नहीं सकते थे, अभिभूत है हम तो। और 3 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बजट में हमें पता पड़ गया कि नर्सिंग कॉलेज भी आएंगे, कुछ तो मेरे भी दरवाजे आएंगे, इसलिए तीनों में आ जाएंगे और इसीलिए जनता खुश है, प्रसन्न है, अभिभूत है। हम कैसे धन्यवाद दें माननीय सभापति जी। हम जानते हैं कि पोषण अभियानों का परिणाम है एनीमिया मुक्त
देश बनाने का परिणाम। अभी राज्यपाल हमारे मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल आए थे, वो बड़े संवेदनशील हैं। सिकल सेल पर उन्होंने एक सेमिनार का आयोजन किया। सिकल सेल जैसी घातक बीमारी आजादी के बाद आज तक दूर ना हो सकी, लेकिन भारत सरकार की संवेदनाएं देखो, आपकी सहृदयता देखो कि सिकल सेल मुक्त भारत बनाने के लिए 2047 का लक्ष्य आपने रख लिया। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं 4 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मारे जाते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य मंत्रालय को, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को। 2025 भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, इस पर कठोर काम ये देश कर रहा है, इसलिए मैं तो बधाई धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति जी, हम सब जानते हैं कि आज मातृ मृत्यु दर में, बच्चों की मृत्यु दर में और जो गिरावट आ रही थी उसको सुधारने का काम हुआ। कालाजार भारत से मुक्त हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। हम सब जानते हैं, हमने देखा, इन्होंने तो उपहास उड़ाए थे जब पहली आपकी सरकार अटल जी की सरकार में और पल्स पोलियो अभियान रोटरी क्लब और अटल जी की सरकार के संयुक्त सहयोग से देश में आया था। 2 बूंद पोलियो, आज उसका परिणाम क्या है माननीय सभापति जी? 2 बूंद पोलियो पिलाने का परिणाम है भारत में किसी की मां, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी अपनी कोख से अपंग बच्चे को जन्म नहीं देती है। यह हिंदुस्तान बनाने का संकल्प अगर लिया है तो वो बजटीय धारणा में प्रकट होता है। माननीय सभापति जी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर कैसे उपहास थे। एक दिल्ली में माइक से अनाउंस था, एक मुंबई में टिकटों का प्रलोभन था, बसें लगा रहे हैं अपने घर भेजेंगे, पता नहीं था लोगों को सड़कों पर चलने को मजबूर कर दिया। माननीय सभापति जी, इनके भटकाने का परिणाम यह आया कि 8 महीने का पेट में बच्चा लिए मां, 1.5 महीने का, 1 महीने का हाथ में बच्चा लिए बहन सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर थी। बसें लगाई इन्होंने, सरकारों ने बॉर्डर पर छोड़ दिया उन लोगों को। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी और देश के तमाम ऐसे तमाम लोगों ने और देश में करोड़ों करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाने का प्रबंध किया है। मैं धन्यवाद दूंगा नड्डा साहब को, मैं धन्यवाद दूंगा मेरे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को। रात दिन करके उन्होंने प्रदेश भर के अंदर, देश भर के अंदर कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, सरकारें खड़ी हुई। हम सब जानते हैं 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का महान अभियान उस समय हम सब के लिए कारगर हुआ और कोई भूख से परेशान न हुआ, ये भारत बनाने के लिए। अब हम तो अपने क्षेत्र की जानते, मेरे तो कई कांग्रेसी मित्र भी हैं, मुझे वोट भी करते हैं। मैं तो यहां सार्वजनिक रूप से कहता हूं, उसमें से कई आ भी गए पार्टी में हमारे साथ। स्नेह का यह रिश्ता दुश्मनी में नहीं चलता है, लेकिन उनकी पत्नियों के, उनकी बहनों के टेलीफोन आ रहे थे, हमारे नेता ने कहा ये मोदी वैक्सीन नहीं लगाना। अरे बाप रे, अरे आपका पत्रकार फोटो खींचता है, ये मोदी वैक्सीन लगा लेंगे तो पार्टी हमें निकाल देगी। हमारे बड़े नेता कह रहे हैं ये वैक्सीन, मोदी का वैक्सीन, मोदी का वैक्सीन। मैंने कलेक्टर से बात किया, मैंने कहा बड़ा परेशानी का काम हो गया कलेक्टर साहब, ये भाभियां सब मुझे टेलीफोन करती है, इन नेताओं को वैक्सीन लगाने के लिए क्या करें। हमने एक अभियान चलाया, रोटरी क्लब, लायंस क्लब को हमने ऐसे तमाम क्लबों को कहा कि अपने अपने धर्मशालाओं में आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम ले लो, ताकि हम अपने ऐसे भाइयों को जो फोटोग्राफी से डर रहे हैं वैक्सीन के लिए भेज देंगे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, ऐसे नेताओं की अपील न सुनते हुए तमाम लोगों ने वैक्सीन लगा लिया। मैं ढूंढकर ऐलान करता हूं कि कोई भाई ऐसा बता दे जो वैक्सीन विरोधी वैक्सीन न लगाया हो, तो कृपा करके मेरे सामने आ जाए कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से। मैं धन्यवाद दूंगा मनसुख भाई को, क्या गजब का मैनेजमेंट था। मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी उस समय के, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, वित्त मंत्री जी को। कमाल का कार्यक्रम साहब, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, देश और दुनिया में उसकी क्या ख्याति हुई, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एम्स पर बात करना, मेरा समय है अभी, मैं एम्स पर बात करना चाहता हूं। मैं तो शुरू किया है, मैं एम्स पर बात करता हूं, ये कहते हैं एम्स हम लाए, एम्स हम लाए, एम्स हम लाए। अब मेरा बेटा एक दिन मेरे से बोले, पापा यार एम्स ये कांग्रेस के लोग लाए थे क्या? तो मैंने कहा चलो ढूंढते हैं। तो पता पड़ा एम्स आया था पंजाब की महारानी की बड़ी एक कृपा और योजना से, दिल्ली का एम्स। बात के एम्स क्या हुआ, तो सूची निकाली। अब सूची निकाली तो भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश। गजब हो गया साहब, ये तो अटल जी ने 2003 में घोषित किए थे। अरे बड़े नाम ले लेके देश भर में घूमते हो। ये बच्चे अब पढ़े लिखे हैं,
ये भरोसा नहीं करने वाले हैं। इनके परिवार के लोग ही गायब हो गए। वो बोले पापा ही झूठ बोलने वालों के साथ है। भैया ये तो रिकॉर्ड पर है, 2003 करते करते 12 आ गया। हाँ, इन्होंने एक किया, एक रायबरेली, गजब, एक रायबरेली इनके नाम है। मगर साहब देव कृपा ऐसी थी कि पूरा करने का मौका ही इनको नहीं मिला। वो भी 18 में पूरा हम ही ने किया। इनके खाते में लिखा पड़ा कुछ नहीं, लिए कागज घूमते रहते हैं और एक नाम ले लेते नेता का। अरे उस जमाने के कांग्रेस के लोग सरदार पटेल से लेकर बाबू जगजीवन राम तक, कोई तुम्हें लाइक नहीं करता, डिसलाइक हो गए, कोई लाइक नहीं करता। उनकी चीजें गिनाया मत करो। और हम तो एक बात जानते हैं, धन्यवाद तो देंगे माननीय सभापति जी। मैं तो हमारे अधीर रंजन जी के साथ श्रीनगर गया था 15 अगस्त 2021 को, झंडा वंदन था 15 क्रॉप के साथ। गलवान घाटी तक गई थी टीम पूरी। वो भी खुश थे, हम भी खुश थे साहब। ये भारत की सेना। अरे अभी परसेंटेज बता रहे थे लोग। अरे परसेंटेज में कुछ नहीं समझते आंकड़े बताओ। 2,03,000 करोड़ का बजट इनका आखिरी बजट है, जो 2,03,000 करोड़ रुपए सेना को देता था। 10,000 करोड़ की पेंशन के लिए इनका नेता सड़क पर धरने पर था साहब। हम भी पूछते थे ये 10,000 करोड़ की बड़ी राशि 1 रैंक 1 पेंशन के लिए देंगे कैसे? आज बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज लोगों को भटकावे और छलावे में ले जाते हो। आज लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, वह पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि भारत ने अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करके 2,03,000 करोड़ के बजट को 5,95,000 करोड़ के विशाल बजट पर पहुंचाया। धन्यवाद के स्वर नहीं निकलते। मैं तो धन्यवाद दूंगा राजनाथ जी को, मैं धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को, और धन्यवाद तो निर्मला सीतारमण जी का भी बनता है, और धन्यवाद मनोहर पर्रिकर जी का भी बनता है। कैसे चुकेंगे साहब, बदल दिया है देश। मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूं। सेना तो सेना, हमारे यहां सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मुख्यालय है नीमच, सीआरपीएफ वहीं से बना। अब जब सीआरपीएफ प्रारंभ हुआ, उसका बर्थ प्लेस है, तो उस बर्थ प्लेस के अंदर आप कहते पैसा नहीं आता। मेरे क्षेत्र में कभी पैसा आया नहीं साहब। ब्रिटिशर्स ने बनाया था सीआरपीएफ, खंडर होने को आया था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे सभापति जी, 58 करोड़ रुपए की राशि में 360 आवासीय क्वार्टर बनाए हैं। 28 करोड़ रुपए की राशि में 5 बैरक बनाए हैं। इसमें महिलाओं का बैरक पहली बार आया है। 4 करोड़ का ऑडिटोरियम है और 5 करोड़ के स्विमिंग पूल है। हम तो इतना जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल मेरे सीआरपीएफ में आ गया। और अध्यक्ष जी क्या बात करें, देश तो बहुत बदल गया है। आईएनएस विक्रांत या नौसेना का ध्वज, बच्चों में रोमांच है, वो ध्वज बदलना भूल गए थे। आज बच्चों में रोमांच है कि हमारे ध्वज को स्मरण किया है। राफेल का विषय या ब्रह्मोस मिसाइल की बातें तो मैं करूंगा नहीं। किस तरीके से हम दुनिया को अब बेचने वाले देश हो गए, किस तरीके से अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एचएएल ने बनाया है। चिनाकू और अपाचे हमारी सेनाओं में सम्मिलित हैं। मैं उन बातों को नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि निर्यात पर 307 सामग्रियां मैक इन इंडिया, मैक बाय इंडिया, मैक फॉर इंडिया के तर्ज पर भारत में आई है। और माननीय सभापति जी, मैं तो इतना भी जानता हूं, गर्व भी करता हूं, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी किए थे। मेरे अपने गांव में भारत सरकार ने एक सैनिक स्कूल दे दिया है, और दूसरा सैनिक स्कूल भी मेरे ही संसदीय क्षेत्र में सीआरपीएफ के नीमच में आने के लिए तैयारी पर खड़ा है। सैनिक स्कूल 2, मेडिकल कॉलेज 3, गजब। एक आ गया सैनिक स्कूल, एक आएगा। हम तो मांग पर खड़े हैं, संभावनाओं पर खड़े हैं। नर्सिंग कॉलेज 3, कितना गिनाएंगे, ये कहां थे इतने सालों से। और इसीलिए हम एक बात जानते हैं कि आज देश गर्व करता है, भारत की सेनाएं बदली है, भारत की सेनाएं गर्व से खड़ी है। माननीय सभापति जी, पीयूष गोयल जी को धन्यवाद न देंगे और अश्विन वैष्णव जी का धन्यवाद न करेंगे, मनोज सिन्हा जी का स्मरण न करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब हम सब लगे थे साहब, पटरी पूरा रिकॉर्ड खोजा साहब सभापति जी, सारा अंग्रेजों का लगाया पड़ा पटरी। वो स्टेशन भी वैसे ही बने पड़े, वो स्टेशन भी वैसे, पटरियां भी वही, और लिए डब्बा ये बताते रहे हम लाए। आज मैं गर्व से कहता हूं, माननीय सभापति जी, क्षेत्र का सीना फूला पड़ा है। 400 करोड़ रुपया तो आपने नीमच से रतलाम के दोहरीकरण के लिए मेरे क्षेत्र को दे दिया।
150 करोड़ रुपए आपने नीमच से बड़ी सादड़ी, वो सांसद जी यहां नहीं है, बैठे हैं पीछे, नीमच से बड़ी सादड़ी, अरे साहब 150 करोड़ रुपया, और नीमच से चित्तौड़गढ़ के लिए 50 करोड़, बड़ा गजब है। और पहले पिछले साल दिया वो तो मैं गिना ही नहीं रहा हूं, अभी निर्मला जी का ये 5वां बजट है, अगर वो गिनाऊंगा तो ये सब कहेंगे टाइम हो गया। अरे मुझे एक बात समझाओ, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया माननीय सभापति जी, हमारे यहाँ के वृद्ध, हमारे यहाँ की महिला बहनें रेल के डब्बे में चढ़ नहीं सकती थी, आखिरी डब्बे में। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी प्लेटफॉर्म अब ऐसा नहीं है जो रेल की लंबाई के बराबर नहीं है, हम गर्व कर सकते हैं। आपने क्या ध्यान दिया महिलाओं पर और वृद्धों पर, क्या ध्यान दिया बच्चों पर, हम गर्व से कह सकते हैं, हम गर्व से कह सकते हैं। हमारे यहाँ एक पहले सांसद कांग्रेस से सांसद रही है, वो कांग्रेस की सांसद रही है, एक अंडर ब्रिज एक, और माननीय सभापति जी मेरे पास आपने दिए 65 अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज 65, क्या प्रशंसा नहीं करेंगे साहब। अमृत स्टेशनों की झड़ी है, मंदसौर बना दिया, अमृत रेलवे स्टेशन नीमच बना दिया, गरोट और शामगढ़ घोषित हो गया, जावरा और सुवासरा हम डिमांड पर लगाए हुए हैं। माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश को इस बजट में रेलवे में 13,607 करोड़ की विशाल राशि दी है, जो इनके पूरे कार्यकाल में 5 साल में कुल 631 करोड़ रुपए आए थे, आज 13,607 करोड़ की विशाल राशि आई है। माननीय सभापति जी, बात अगर गडकरी जी की ना करेंगे और सड़क की ना करेंगे और धन्यवाद नहीं देंगे तो कैसे रह पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अरे पूरे मेरे संसदीय क्षेत्र का प्राण बन गया है, 4 मार्ग दिए हैं। ये बैठे हैं उज्जैन के सांसद जी, इनको जोड़ दिया उधर से, और हमारे अभी झालावाड़ के सांसद जी को भी उन्होंने हाँ कर दिया है। 6 मार्गों से 4, 5, 6 मार्गों से जोड़ा है अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र को। 1 लाख करोड़ का विशाल सड़क, 1 लाख करोड़ का विशाल सड़क मेरे संसदीय क्षेत्र को मिला है। धन्यवाद तो देंगे, मगर एक बात कहूंगा, सुदूर ग्राम सड़कें अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र में सुदूर, अरे ये तो भूल जाते हैं ले लेकर, ये सांसद गिनाते नहीं और इनका डब्बा पता नहीं कहां का बजाते रहते हैं। सुदूर ग्राम सड़क 1496 सड़कें मैं लिस्ट के साथ दे सकता हूं, मैं डायरी साथ में रखता हूं, 1496 सड़कें अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र में बनी है। क्या विकास गिनोगे आप, क्या विकास गिनोगे आप। सीआरएफ मद की सड़कें गिनाएं, पीएमजीएसवाई की 312 सड़कें अकेले। हमारी मालवी भाषा में कह सकते हैं, हम नुगरे नहीं हो सकते, लेने के बाद भूल नहीं सकते। कोई हो तो हो, अपने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास में भारत सरकार के इस बजट को गिनाकर नहीं गिनाकर ये अपराध करते हैं। ग्रामीण विकास सड़कें, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, अरे अकेले शांति धाम बने, शांति कपिल धारा के कुएं मेरे जिले में 1864, 1817 नीमच जिले में, जावरा में 1059 कपिल धारा के कुएं लेकर भूल जाओ। अमृत तालाब का तो क्या कहना, 75 पूरे बन गए हैं। और इसीलिए मैं तो धन्यवाद दूंगा नरेंद्र सिंह तोमर जी को, भाई गजेंद्र शेखावत, प्रहलाद पटेल और गडकरी जी को भी। माननीय सभापति जी, कांग्रेस भी मोदी जी को रोकती है और जनता भी। कांग्रेस भी मोदी रोको अभियान में लगी है, जनता भी मोदी रोको अभियान में लगी है। फर्क बस इतना है, कांग्रेस ने सोचा आने नहीं देंगे और जनता ने सोचा जाने नहीं देंगे। माननीय सभापति जी, पर्यटन की बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, और पर्यटन के साथ जानवरों की बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अभी मैं एक संवाद को 10 एक बार सुना, मेरी यात्रा में कुत्ता आ गया, मेरी यात्रा में सुअर आ गया। अरे भाई, कुत्ता आ गया, सुअर आ गया, गाड़ी से कभी उतरे नहीं, हवाई जहाज से नीचे पांव नहीं रखा। मेरे गांव में तो कुत्ता, अगर आप गांव में आ जाओ ना, तो वो गांव के अतिथि को विदा करने गांव के बाहर तक भी आता है, और गलत आदमी आता तो पजामा पकड़ने भी आता है। अरे भाई, आप कुत्ते और सुअर की बात बताते हो, आप चीते और शेर की बात नहीं करते हो। एक जमाना था कुत्ते आते थे हवाई जहाज में, जमाना बदल गया, अब तो चीते आते हैं हवाई जहाज में। मेरे प्रदेश में हवाई जहाज में चीता आया है, और अब मेरे क्षेत्र में आ गया ना, आ गया, 12 और आ रहे हैं। कहां बैठे हैं सांसद जी? यादव जी, जोरदार।
आइए आइए, मैं सबको निमंत्रण करता हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र के बदले बदले रूप में आइए। मेरा संसदीय क्षेत्र 8 साल में बदला है, उसे देखने आइए। स्वदेश दर्शन सर्किट में जोड़ा है, बुद्धिस्ट सर्किट में जोड़ा है। उमा महेश, अरे मैं बस 5 मिनट, उमा महेश की प्रतिमा सुनिए माननीय सभापति जी। उमा महेश की प्रतिमा फ्रांस और वाशिंगटन गई थी। नंदी की प्रतिमा भारत महोत्सव में फ्रांस वाशिंगटन गई। धमनार की गुफाएं, धर्मराजेश्वर की गुफाएं, रॉक कटिंग के, उस पर भारत सरकार ने भी पैसा खर्च किया है। आइए चतुर्भुज नाले को देखिए, प्राकृतिक सुंदरता देखते बनेगी। यात्री अब भारत के बाहर मत जाइए, यात्री अब मेरे संसदीय क्षेत्र में आइए, वहां वाटर स्पोर्ट मिलेगा, वहां कुत्ते और सूअर के साथ साथ आपको चीतल मिलेगा, आपको गिद्ध मिलेगा। ये गिद्ध संरक्षण अभियान देश का मेरे ही क्षेत्र में है माननीय। वहां तेंदुए मिल जाएंगे 70, वहां भेड़िए मिल जाएंगे, सियार मिल जाएगा, लोमड़ी मिल जाएगी, लकड़बट्टा और रीछ मिल जाएंगे, 1,500-4 हजार मगरमच्छ भी मिल जाएंगे। दुर्लभ पक्षी, देश और दुनिया के दुर्लभ पक्षी मिल जाएंगे। आप कहां ढूंढने जाते हो? और 4,000 टन मीठे पानी की मछली हम बंगाल भेजते हैं। आओ मेरे क्षेत्र में, बंगाल का मीठे पानी का पसंद किया जाने वाला मछली भी मेरे यहां से। माननीय सभापति जी, पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर में, और बड़ा भव्य दिव्य मंदिर है हमारे यहाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित किया है। एक लॉर्ड चाइना जिस होड़ों से डरते थे, वो पराजय का स्थल मेरा क्षेत्र है। आइए दर्शन करने के लिए। अभी 28 करोड़ रुपए हमारे नमामि गंगे अभियान से मेरे क्षेत्र को मिले हैं। मैं समाप्त कर रहा हूं। तपस्या करो तो फल जरूर मिलता है, तपस्या करो तो फल जरूर मिलता है, मोहब्बत करो तो प्यार जरूर मिलता है, दाढ़ी रखो तो शिवा या टैगोर जैसी जो नमन करने को जरूर मिलता है, दाढ़ी रखोगे मार्क्स या सद्दाम जैसी तो लोगों को नोचने का मौका जरूर मिलता है। क्या बात है माननीय सभापति जी। अगर एजुकेशन की बात नहीं करूंगा, क्या सीएम राइज स्कूल हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किए हैं, सेंट्रल स्कूल मुझे 2 अतिरिक्त गिफ्ट में मिले हैं। सेंट्रल स्कूल, सैनिक स्कूल, अटल टिंकरिंग लैब। लेकिन पीएम श्री स्कूल के आने की खबर इस देश में बड़ी शानदार है साहब। पीएम श्री स्कूल आ रहे हैं, कितने? 14,000, मुझे मिलेंगे 200 से अधिक। इसलिए मौका तो बड़ा जोरदार है, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा सभी लोगों को। लेकिन एक बात कोट करूंगा माननीय सभापति जी, 1949 में इसी सदन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा दे दी जाएगी। मगर वो पंडित जी सदन में कही बात को भूल गए और उनके राजीव गांधी ने फिर दोहराया, 21वीं सदी आने के पहले पहले दे देंगे। दुर्भाग्य न दे पाए। सर्व शिक्षा अभियान तो अटल जी लाए और शिक्षा नीति में परिवर्तन तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। माननीय सभापति जी, सिंचाई की बात तो करने दो, किसान की बात अगर रह गई तो बात रह जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूं इन लोगों को, ये बताना चाहता हूं, चंबल डैम बना था 1956 में, लेकिन मेरे क्षेत्र में भानपुरा में 13,354 हेक्टर, गरौठ में 21,400 हेक्टर, शामगढ़ में 80,000 हेक्टर, कयामपुर में 1,12,000 हेक्टर, रामपुरा में 65,000 हेक्टर और मल्लारगढ़ में 46,500 हेक्टर, 3,38,000 हेक्टर। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का ड्रीम माइक्रो इरिगेशन सैटेलाइट से नियंत्रित होता है, वो इरिगेशन प्रोडक्ट मेरे यहां आया है। इसलिए मैं न बधाई दूं, ये संभव नहीं है। और जल जीवन मिशन बड़ा कमाल का है साहब। मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरी बात उद्योग पर बाकी है माननीय सभापति जी, खेल पर बाकी है मेरी बात। चलो मैं समाप्त भी कर देता हूं। सहकारिता पर प्लीज कंक्लूड। अच्छा चलो एक बात कर देते हैं। हाँ। हमारे यहाँ यात्रा का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ यात्रा का बड़ा महत्व है। चलो ये भी छोड़ देते हैं, समाप्त कीजिए। लेकिन मैं समाप्त कर रहा हूं। आपको मैं इस बजट की प्रशंसा कर रहा हूं। सारे मंत्री और बजट की प्रशंसा में भाव क्या आते हैं, और जो भाव आते हैं ना, बजट की प्रशंसा के भाव और बजट के भाव लिए कहां जाते हैं, उस पर एक गीत है। गीत गाना मुझे आता नहीं, इसलिए पढ़कर गीत को सुनाऊंगा। आप गा सके तो गाओ। बजट के भाव सुन लेना। चंदन है, अरे ये बजट के भाव कहां से लिए? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है,
जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां माँ प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद जहां सुधीर कर्म जी। से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, ज्ञान जहां गंगा जल सा निर्मल अविरामी है, इसके सैनिक रणभूमि में गाया करते गीता है, जहां खेत में हल्के नीचे खेला करती बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय सभापति जी, मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद दूंगा निर्मला सीतारमन जी को, और धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद श्री ए राजा, सांसदों को। श्री ए राजा। Mr. Chairman, thank you for the opportunity given to me to comment upon the budget submitted to this House. Sir, I had opportunity to hear Her Excellency President and the Honorable Finance Minister respectively in the presidential address and the budget. Sir, past 2 days, Parliament has witnessed heat arguments and accusations. Even allegations were serious in nature, made as against the Prime Minister for the reasons best known to the Treasury benches. The allegations that have been made by the opposition strongly have not been refuted. The status of the allegation in the absence of the refute, I think that it will stand as true. Yes. What the Treasury benches going to give a news to the nation, I do not know. What type of message this will send to the nation? Sir, first time I have come across a irony in the Parliament. 2 friends were brought into the opposite pole by raising slogans. When the Prime Minister starts his speech, my friends from the Treasury benches used to say, Modi, Modi, Modi. When allegations are being levelled as against the Prime Minister, the same time or simultaneously, the opposition benches started to say, Adani, Adani, Adani. Is it not the irony that 2 friends were part apart, opposite side, and slogans were raised? But 2 very good friends. What type of message is going to send to the people where the Prime Minister claims as if he is enjoying confidence, patronage, protection and trust of the 140 crore people? How he can claim 140? Sir, they are having 310 or 320 pre-poll alliance, remaining almost 200 non-BJP. Almost 200 people are not in consonance with the allegations or in consonance with the celebrations you made in the Parliament. 250, not just 200. At least 200 to 15. Roughly you calculate. Each and every member of Parliament. I asked Supriya. 70% is non-BJP. She says she is being represented by 20 lakh. 23 lakh. My friend from Kashmir says 30 lakhs. Another friend says, Gaurav Goge, he says 25 lakhs. So averagely we put it 20 lakhs. 20 lakhs. 200 member of parliaments not representing you, not accepting you. But you are claiming trust for 140 people. Is it not is it? No. That is official, constitutional. He is not telling I am representing the people. He is telling I am enjoying the confidence. I am enjoying the patronage. I am enjoying the protection. राजा जी अपनी बात रखिए. You address to the chair. The statement और अपनी बात by रखिए. the Prime Minister as if he is enjoying 140 crore people confidence is nothing but a diabolical contrivance. Sir, coming to the budget, I am an expert in the financial diligence, nor in physical consolidation. Yet, I want to submit
that this budget gave some disappointments, not only to me, to the people, those who are living in the lowest ebb of the social and economical order in the country. I'll come to one by one. Most of the media and most of the televisions are showering encomium upon the Prime Minister and the government. The reason is known to everybody, no secret. They have been compelled, they have been confined, otherwise they cannot run the media. That is the situation today. Coming to my disappointment, why I am disappointed? I want to synchronize. I try to synchronize my disappointment with the facts and figure. Sir, I am disappointed with the budget because the budget fails to live up the expectation of the people at large. My disappointments on 4 counts. 1, education. 2, health. 3, food and agriculture. And 4th, employment, social security. In order to address my time constraint, I shortlisted 4. That does not mean you are having every jubilant achievements in other fields. Yesterday, Prime Minister claims that we made the President of India from the tribal community. Sir, I want to recall the words of Ambedkar. I quote, he says, it is easy to give power to a person, but it is very difficult to give knowledge and wisdom. Simply because His Excellency came from a tribal village, I respect her. I am having reverence on her. But this government is having no right to claim that you are the savior of the tribals. Because the fact is always, what are all the attempts that has been given by this government to give knowledge and wisdom to the tribal people, to the scheduled caste, to the underprivileged community, for the disabled? There is a provision in the budget which will bring knowledge, which will bring education. You have to teach them, you have to create infrastructure. Is it in the budget? What is your initiative on primary and secondary education? You are claiming that our allotment has been risen substantially. I do accept. But come to the primary and secondary education. No doubt, you enhance the allocation of higher education. That does not mean this government is giving due attention for the primary education, which is clubbed with the scheduled caste, scheduled tribe and gullible masses of this country. Still, budget is very silent on SC, ST and OBC for primary and higher secondary education. Sir, promise that has been made for the recruitment of 38,000 teachers in Yegalaiva schools. I appreciate tribal schools, but not even a single new school for tribals has not been opened. You are promising for 5 years 38,000 teachers to be recruited, but where is the no school? Is it not a mockery? That too you are calling it after Yegalaiva. You know the story of Yegalaiva? Yegalaiva was compelled to give his thumb as a Sudra since he got education. You are doing Yegalaiva on one side, other side you are taking away the fingers of the Dalits and OBCs and Adivasis. Shame. Is it not a verbal juggler in your budget? Sure. Sir, you are entitled to say, yes, legitimately you are entitled to say 13% of the substantial allocation has been enhanced in the budget. But what is the truth? Certainly, the hike is not sufficient if we keep in mind the need of public educational institutions and augmenting teaching and research on par with global standards. Don't go for merely figures. Even yesterday, the railway minister used to say, for Tamil Nadu allocation, nine times bigger than the allocation that was done in the 2009. You are isolated to the railway. You go for the general budget. The amount of bulk of general budget, numerical strength, went 10 times. When the total budget went 10 times, you are saying that 7 times bigger than this. Is it not a verbal jugglery? It's not a joke. It's not a mockery. Don't play with this numerical game, please. Sir, coming to the allocation that has been made for the education is not at all tally with the need of the people for the those who are living in the lowest ebb of the social order. Ultimately, what happened?
the private educational institutions is going to loot the money. And consequently, purchasing power of the middle class is drastically going to be eroded. Finally, I can say, sir, which is no doubt, the promise that has been given continuously for 9 years, that this government is going to give 6% GDP for education. This is the 9th year. Your assurance has not been kept alive. You did not achieve your assurance. 6% of GDP was not done. So as far as the education is concerned, my disappointment is true. You cannot refute it. Sir, coming to the second point, health. What happened to health? PM celebrated himself. Vaccination of COVID. Vaccination of COVID. It is because of science. It is because of science, not by you. Does it mean to say you tackled the epidemic when it was in peak? That is your achievement. I can dare challenge. None of the ministers in this government visited any hospital during the epidemic. None of the chief ministers visited any one of the hospital. My leader, M.K. Stalin, present chief minister, when he was an opposition leader, wear the medical dress and went to corona ward, touched the people and gave assurance, don't worry, I will be there. He is the only leader available in the entire world, I can say. You are not coming out at the time of epidemic, and now you are claiming tallest jubilant momentum that we did vaccination. You see, sir, wait, sir, I want to recall the evidence. During the epidemic, sir, no. So the question is, sir, interruption. Sir, the question is whether the Prime Minister or the Health Minister, why the former Health Minister was said? You know the answer better. The epidemic situation was not at all handled properly, medically, prudently. That is our charge. No preparatory measures in terms of medicine, in terms of bed, in terms of doctors, in terms of nurses, and not even in terms of oxygen cylinders were not done properly. That is the status. No ventilator at all. Nation has come across thousands of dead body even without civilized burial. That is your performance of the government. What you did at last? Light the candle. Candle. Light the candle. Is it the scientific temper to establish? Sir, I come to after the COVID. Leave it. You got the vaccination now. But 230 million Indians pushed to poverty due to the COVID. How much? 230 million. What is your solace for them? Nothing. What you did? I think that no solace was given to them. Sir, coming to the national... 1 minute, sir. 7. What is the data says? NFHS data says, out of COVID, 35% of students were stunned. 32% were underweight. Yet, no rise in the budgetary support this year. No attempt has been made to equip yourself right from primary health center up to district hospitals to withstand before another epidemic if comes. Sir, your announcement of 557 nursing colleges, nursing schools, 157 nursing schools were announced in the budget. It is being celebrated exorbitantly. But without any proper care, when the structural problem is there, these 157 nursing schools will not serve any purpose, take it granted. Right. What is hard to digest is National Health Mission allotment. This year declined 500 crores. 500 crores cut in the National Health Mission allotment. What is the answer? National Livelihood Mission, 150 crores reduced. Total disappointment in health. Then coming to my third chapter, agriculture. Good health is associated with agriculture. What is your earlier promise? This government will make double term income in the agriculture arena. Within 2022. Now we are standing at 2023. Is it doubled? Where is your promise?
You are claiming substantial rise in capex. Always they are saying, no, capital expenditure is more substantial. 7.5 lakhs. But see the agriculture, utter neglect. Out of 7.5 lakh crore of the capex, you are not spending 120 crore for crop and animal husbandry. Millets became the menu of the Prime Minister in the public domain. Millet came to the Central Hall. Today my lunch was millet. You are celebrating millet. Where is the budgetary provision? 1 crore, 2 crore, 3 crore for millet? No. Allocation for irrigation dwindled down from 350 crore to 310 crore for this current year. Attractive caption in the budget, Finance Minister used, I quote, Agriculture Accelerator Fund. Agricultural Accelerator Fund. I do not know where is the accelerator, where is the clutch. Numerical figure is missing. This Agricultural Accelerated Fund is on the budget paper, but you are going for the budget estimate. There is no allocation. Who is going to be cheated? People or opposition, or you are cheating yourself? I do not know. Food storage and warehouse in the Ministry of Consumer Affairs. Budget estimation reduced 90,000 crore. Ministry of Agriculture deprived 8,000 crore when it is compared with the last year budget estimation. I can go on, but in short, health, nutrition, agriculture sectors are being undermined, and as such, my disappointment became true. Sir, now I come for employment and social security. Sir, 2 minutes, one more hit. Yeah, sir, Finance Minister claims in the budget, I quote, investment in infrastructure and productivity capacity have a large multiplier impact on growth and employment, and unquote. This is the line of the budget. She reiterated in the press conference that the job creation and the control of inflation will be taken by the huge investment in infrastructure. I do admit there is a substantial exponential allotment in the infrastructure. But what is the truth? The increase in capex in the infrastructure are to a larger extent in highways and railways. Am I correct? So far as you are giving the huge money to the railways and highways, which is being used as capital high intensive technology for their building, will have very small wages component. When there is a small wages component, you are saying this much of crores is being pumped, wages component is not even 0.001%. How can you create job? Why you are making something so naive? I am not able to understand. Sir, much has been spoken about Narega. I do not want to touch more. 20,000 crore has been dwindled down, cut off. Out of Narega, this year, 20,000 crore cut off. Maybe 30,000 or 20,000. Okay. But what is the report? PAEG, People Action for Employment Guarantee. The actual need, according to this association, scientific report, we need 2,71,000 crore for this year to satisfy the all people. The need is 2 lakh. Already you reduced to 30 crore. Now it is only 60,000. Who is going to fill up the gap? Gulf. Who is going to fill up the gulf? I do not know. Please look at the NSAP, National Social Assurance Program. Most important program for aged, orphanage people, widow and disabled. The allegation that has been dwindled down 10% more. Sir, you are supposed to guide it by the Gujarat model. Because, sir, 2 minutes. Sir, 2 minutes I will finish. Sir, Gujarat model. You are entitled to say. Am I not entitled to say, what is the Gujarat model you are applying here? What is the fruitful result? Please go for that. Our Chief Minister explained what is a Dravidian model being run in government in front of the Prime Minister. In terms of new employment opportunity, social security measures, we needed or not at all, the issues are not at all viewed and addressed properly by this government. Sir, yesterday, during the question hour I come across, I give a simple example and go on for a final conclusion. The quick attention of this house, BPL ratio, yesterday question hour, Gujarat, this year, Gujarat 22%, UP 31%. I cannot read all other states. Whereas Tamil Nadu 14, Kerala
10. This is Dravidian model. Which model this country is going to prefer? Please decide. Sir, now I am concluding very sensible point, concluding within 1 minute. Sir, I am concluding my speech with the wound and pain, with a confidence that the heal and solace will come near future. I have come across today question hour. What has happened? Today question hour, Minister used to give the answer last question, by which the funds allocated last year, 1,810 crore for minorities welfare together as umbrella program. This year it has been dwindled down, mere 600 crores. What type of message will send to the people for minorities? Sir, it is unfortunate that the voices are being raised not by common man, by the constitutional occupants, that the basic structure of the constitution going to be amended, has to be amended. It is very dangerous for minorities. Sir, one letter I quote, I will finish. Sir, Kesavananda Bharati case, 1972, by which the basic structure of the constitution has been protected. Who argued? 73, maybe 72, maybe. You take it 73. Sir, 68 days, arguments were advanced before the Constitutional Court, larger bench, 13 judges. Who argued before the court? The famous lawyer, Balkiwala. Balkiwala argued the case. Nani Balkiwala? Palkiwala. He argued the case. He saved the basic structure of the Constitution. When the basic structure of the Constitution was saved, Prime Minister was Indira Gandhi. Sir, one quote I quote and finish. Nani Palkiwala used to write the Prime Minister after the judgment. I can give the date. 9th November 1975. 9th November 1975, I quote. Letter to the Indira Gandhi Prime Minister by Palkiwala. The basic structure of the Constitution is the real safeguard for minorities. They are bound to feel grave apprehension at the prospect of the big health alterable. Today we saved the basic structure. How many of your successors are? Please give attention. How, the line says, how many of your successors will share your own exemplary non-communal outlook? Unquote. Thank you. Sir, finish it. Non-communal outlook he wanted from the Prime Minister Indira Gandhi for his successors also. Today, minorities, sir, I finished. Minorities fund has been dwindled down. Sir, one thing. Please, I folded hand. I am begging from the treasury benches. Prime Minister is not here. But I am begging, save the Constitution, which first line says, we the people of India. Thank you. Don't reread, we the people of India. Thank you very much. Thank you. Shri Jaydev Galla ji. Jaydev Galla ji. You speak, Jay, what is this? Let him speak. Jaydev Galla. Speaker, sir. अब नहीं करते. Please sit down. बैठिए करते हैं. You can start. Thank you, Speaker, sir. And sir, since I have a very short amount of time, I'd ask you to start my time from now, please. Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the final full-fledged budget of this government and of this 17th Lok Sabha. Sir, the budget speech started with a self-congratulatory note that India has successfully overcome the troubles that came with COVID. It is true because the economy has nearly recovered what was lost, restarted what has paused, and re-energized what had slowed during the pandemic, the Russia-Ukraine conflict, and the subsequent geopolitical situations, and the ongoing monetary tightening that we're seeing in the United States and other advanced countries. So it's a tightrope walk, and I compliment the Honourable Finance Minister for her balancing act over a gut-wrenching situation. Sir, the budget has both hits and misses, from what I can tell. The hits, if I may say so, include things such as 10% increase in the gross tax collections, 33% increase in capital expenditure of 10 lakh crores, which comes to 3.3% of GDP. And if you add in grant-in aids given to states,
it comes to 13.7 lakh crores, or 4.5% of GDP. 2.4 lakh crores noteworthy increase for the railways, an 11% increase in agricultural credit target, a 66% increase in the PMAY for more focus on Tier 2 and Tier 3 cities, income tax relief for the middle class, 74% increase for the Swachh Bharat mission, and 157 nursing colleges to be attached to 157 medical colleges to be set up by the Government of India. But, sir, there are some misses as well. A few I'll just noteworthy misses include reducing, I think many members have mentioned this, reducing the Narega allocation to 60,000 crores from nearly 90,000 crores in the revised estimates of 22-23, reducing the allocation for the National Health Mission from 37,000 crores in the budget estimates of 22-23 to 36,787 crores, reducing the allocation for PM food processing enterprises to 639 crores from the 23-24, from 900 crores in 22-23, reduction in allocation for PM Kisan to 60,000 crores against 68,000 crores this fiscal. Sir, before I proceed with my observations on the budget and giving my suggestions on various proposals, I wish to first focus on what this budget is for my state of Andhra Pradesh, sir. Sir, this budget and the Honourable Finance Minister have disappointed the people of AP once again, sir. The issues are many, but I wish to touch upon the most important ones in view of time constraint. Sir, I've been making this speech now for 9 years, and I'm sorry to say that I've had to repeat myself year after year after year, because none of the provisions have been fully fulfilled, and deadline is fast approaching, sir. Sir, I'm deeply perplexed as to where I should start from. Should I start from what the AP government has been doing since 2019, or should I start with what the Government of India has been doing to AP since 2014? I think this is something that, it requires much more time. Unfortunately, I don't have that at my disposal. Sir, AP has been receiving empty promises and scant allocations since the bifurcation of the state in 2014. In this budget, the Finance Minister has given 5,300 crores to the Upper Bhadra National Irrigation Project in Karnataka, but nothing has been given for Polavaram, which is a national project and has been pending for so many years. This is the first disappointment for AP, sir. I would not say much on Polavaram, since the Government of India and the Jal Shakti Ministry knows every single detail of it. I would only request the Finance Minister for approving the second revised cost estimates of 55,657 crores and release the pending dues to Andhra Pradesh, which they've already spent, sir. Even though the Finance Minister allocated 8,406 crores for the railways in AP, taking up 72 stations in AP to be developed as world-class stations, introduction of Vande Bharat to Vizag, giving 1,040 crores for Guntur Guntakal and Guntur BB Nagar doubling projects, etc. There is no mention about the establishment of the new railway zone for AP, sir. This is also a promise that is long pending and has been made several times in this House by several ministers, sir. Sir, the piecemeal announcements or allocations do not work, sir. I agree that 10 crores has been allocated to the new railway zone, but there is no announcement when the new zone would come up and become functional. There is no mention about it either in the President's address or in the budget. Even the Railways Minister has not announced anything on this in his post-budget press briefings. This is the second big disappointment for Andhra Pradesh, sir. Sir, the Finance Minister had given 23,260 crores for 4 metro projects in 21-22. The Government of India spent huge amount for Bangalore, Chennai, Cochin, Nagpur, Nashik metro rail projects. And the Bangalore metro was given 14,700 crores and 19,000 was given for metros, other metros in 2022-23. But there is no mention, sir, about Vijayawada and Visakhapatnam, which is a mandate which, both of these metros have been committed in the AP Reorganization Act, and there's no mention in this budget also, sir.
Rather, since 2014, nothing has been done in this regard. So this is the third big disappointment for our state, sir. Sir, on the one hand, Government of India says there are no states with special category status, post the 14th Finance Commission's recommendation. I don't want to go into details, since the 14th Finance Commission never recommended not giving SCS to AP or any other state for that matter. But in the 2022-23 budget, government has given back IGST to the tune of 3,631 crores for SCS states. For SCS states, sir, they still exist, as incentive for industrial development. And in this budget, the Honorable Finance Minister has allocated 1,814 crores for this purpose. If SCS is given to AP, special category status, it will also be benefited. Sir, we are a new state with no capital and no industrial base to speak of. So many institutions have been left behind in the Telangana state. None of the very few institutions are there in our state. None of the provisions of the AP Reorganization Act are being met, and even here the SCS is being denied to us, sir. The Honorable Finance Minister has reduced allocation to RINL also, Vizag Steel Plant also, sir. In 2022-23, Government of India allocated 910 crores as budget estimate, and this has been reduced to 683 crores in 23-24. This is the fifth big disappointment for Andhra Pradesh, sir. Sir, if one looks at Section 93 of the AP Reorganization Act, it says, and I quote, "The central government shall take all necessary measures as enumerated in the 13th schedule for the progress and sustainable development of the successor states." Sir, I'll conclude. Just give me 2 minutes and I'll conclude, sir. Sir, the central government shall take all necessary measures as enumerated in the 13th schedule for the progress and sustainable development of the successor state within a period of 10 years from the appointed day, sir. And the appointed day is fast approaching. The appointed day will be from 2nd June 2014. That means by 2nd June 2024. This is the final budget before that date is coming, full final budget. The next budget is only going to be vote on account. This is the final chance for this government to allocate funds to fulfill what is in this AP Reorganization Act passed by this House in 2014 with deadline coming up on 2nd June 2024, sir. Sir, I'm just getting to the end, sir. Just give me 1 minute, I'll conclude, sir. We're at the fag end of reaching this 10 years, but not even one of the 17 items mentioned under the 13th schedule has been completely fulfilled, sir. This is the sixth disappointment for the people of Andhra Pradesh, sir. Every single member from AP, cutting across party lines, has been raising their voice since 2014 for conferring special category status to Andhra Pradesh. Elections in AP and for Lok Sabha are not far off, sir. The BJP government still has time to rectify this mistake and implement the decisions of the Union Cabinet taken on the 1st March 2014. I'm only appealing to the Honourable Prime Minister that he has the final chance of saving the mother, which he has assured during the election campaign in AP in 2014. But there's nothing in this budget which is the biggest disappointment for AP, sir. So I'm coming, my final conclusion, sir. Thank you. Thank you. I'll just conclude, sir. Sir, I once again appeal to the Finance Minister, the Home Minister and the Prime Minister to respect the commitments made in the AP Reorganization Act 2014 passed by this Parliament and provide sufficient funds to fulfill all of its provisions in full before the deadline of 2nd June 2020. Thank you, sir. क्या कुछ कहना चाह रहे हैं निशिकांत जी? जी केवल दो छोटे क्लैरिफिकेशन है सर जी कि एकलव्य विद्यालय जो है वो यूपीए ने नाम दिया है, एनडीए ने नाम नहीं दिया है सर। ये जब मंत्री थे और दूसरी बात ये है कि कोरोना में जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में सभी लोग हम लोग रोड पर थे सर, इसीलिए कोई इसके लिए चैलेंज नहीं ले सकता है। आपने किया होगा लेकिन हमने श्री अब्दुल समद समादानी जी, हाँ ठीक है, ओके। क्या एक और डिबेट करानी है? डू यू वांट टू बी डिबेटेड? जी
हाँ चलिए चलिए बोलिए 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 बोलिए. Learned friend says the Yagalava schools were started in the Congress. It is not the question before the house. Who started the questions? Who started the school? Yagalava school? Huh? चलिए ओके ओके. It is immaterial who gave the name. How it is being treated by you. That is the problem. ओके ओके चलिए समाधान लीजिए प्लीज. सर प्लीज बैठ जाइए. ठीक है. my time sir. Sir, thank you sir. Sir, thank you for permitting me to take part in this discussion on the budget. Sir, this budget, which is very, very beautiful when we look from outside, when I look at it, I am reminded of a couplet. मुझे ऐसा लगता है कि बजट ही मुझे बता रहे हैं, मैला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा. Sir, we can't observe and analyze the nature of a tree without analyzing the fruit. The fruit will explain what is the tree. So I know, sir, we can all understand what kind of result this budget is going to produce in the country. Sir, it is not a responsible budget because it does not undertake the responsibility to render help to the common man, farmers, laborers, other backward sections, including the minorities of the country. And sir, it is not a responding budget. It does not respond to the burning problems of the country. There is no concrete plan to check the inflation, no any special measure to save the youth from the peaking unemployment, and to save the people who reel under the price rise. There is no plan, sir. And sir, the real problem remains untouched. The economic needs of the hour are not addressed by this budget. Sir, how can you say that this is an inclusive budget? Our Honorable Finance Minister, when she was presenting the budget, she used this word, inclusion. You are the people of exclusion. You are excluding so many sections of the society. You are not the people including various sections of the society. You include minorities, you include laborers, you exclude minorities, you exclude farmers, you exclude laborers, you exclude women, you exclude even the youth who are very suffering great difficulties due to the unemployment. Sir, then how can you say this is Sarv Hitakari? Sarv Hitakari nahi hai. It is for the purpose of certain sections of the people, to help them. Sir, you stopped the Maulana Azad National Fellowship Scheme of the minority students. And now you have reduced immensely the allocations for the development and for the welfare of the minorities. Sir, in social democracy and democratic pluralism, the role of the minorities are very, very important. It is undeniable, unquestionable. You cannot change the history of the country by changing the names. You can't do that. Sir, a budget has to address, sir, the social inequality of the country. It has to take into consideration the economic equilibrium. This budget does not take into consideration these very important factors. Sir, my learned friend on the other side was quoting a lot of couplets. I may respond to him just by 2 lines. जाने ये कैसा दौर है, दिन हो अगर तो लिखूं दिन. जाने ये कैसा दौर है, दिन हो अगर तो लिखूं दिन. रात अगर हो तो रात लिखूं. रात अगर हो तो रात लिखूं. इसको भी जरूरत नहीं देते आजकल के ये लोग. And sir, not only they excluded the minorities, reducing the allocation for MGNR EGA scheme. Sir, it clearly proves the attitude of the government to the poverty alleviation programs. Sir, and the justification made by the government is that the number of the beneficiaries under the scheme is reducing. Sir, it is not correct.
At least in our state of Kerala, we know it ensures job for 100 days, at least 100 days. This, we call it in Malayalam, Thoilurappu Paribadi. This program, it is very, very important. And sir, this, when I come to the policy of exclusion, this budget does not take into consideration the fiscal federalism. You did not give anything to our state of Kerala. We asked so many things, and the Bengal chief minister spoke against this budget. Bihar deputy chief minister spoke. Chhattisgarh chief minister spoke. Tamil Nadu chief minister spoke. They did not get anything. Even Punjab chief minister spoke against this budget. So that means this is against the fiscal federalism, which is the very basis of our constitution. And sir, it is not a growth-oriented budget, and it is not a stability-oriented budget. No growth, no stability. Growth is not the growth of the affluent. Growth is not the growth of affluent. Growth is the growth of common man. For the growth of the common man, the maximum investment the country needs in the field of agriculture. Sir, even these IT changes and new IT slabs, it is not going to help the common man. It will be helping only those who are with higher income, highest income. Only those people, highest income brackets, they will be getting the benefit of this thing. Food subsidy is stopped, and you have reduced the education budget. You have reduced even health budget. Reducing health budget actually goes against national health policy. National health policy, our government's own policy. And sir, these bank loans for farmers, I may pose a question to the Honorable Finance Minister and my Honorable and learned friends on the other side. How are you going to help the farmers by giving bank loans? How are the banks are going to give and sanction loans to the poorest farmers without enough documents, without sufficient documents as demanded by the banks? How, sir, they will be able to produce such documents? That is my question. And sir, this government theory, sir, I am concluding, sir. Yes, sir. Sir, bank loans, the benefit is not going to be availed by the poorest of our country, the poor farmers. Our country needs more and more investment in the field of agriculture. And sir, the government theory that the government investment will lead to private investment, that has proved wrong. And sir, the country needs nowadays to take into consideration unemployment and inflation. And sir, unemployment is increasing day by day. In the city, it is more, in the cities, it is more than 10%. Our youth are suffering, and this budget has no solution. I request the Honorable Finance Minister of the government to take into consideration the burning issues of the economy of the country and to come forward to solve them, instead of making such and such claims. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. PC Mohanji. Thank you very much, sir. So please allow me to speak in Kannada, sir, my state language. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. 23-24 ಬಜೆಟ್ ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಮೊದಲನೇ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಬಜೆಟ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, SC ST ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಏನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 2004ರಿಂದ 2014ವರೆಗೆ UPA ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1,23,00,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಏನೊಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾರು ಸೂರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತವರಿಗೆ ಸೂರು ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಡಬಗ್ಗರು ಕೂಡ ಇದೇ ತರಹ 2,92 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಕೂಡ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್, ಇವತ್ತು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯುವಕರಿರಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಯುವಕರಾಗ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಾಗ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ತರ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 7,80,00,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಏನಿವತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೂ ಬೇಕು, ಬಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದಡಿ ಯಾವುದೇ BPL ಕುಟುಂಬದಾರ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದ ಅಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇವತ್ತು 80 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೊಂದು ದಿನಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಳೆದ 28 ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಡವರು ಯಾರು ಈ ಕೋವಿಡ್ನಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 80 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ 80 ಕೋಟಿ ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಲಿ, ನೇಪಾಳ ಆಗಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ದಿನಸಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 80 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಪರ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಸೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು 11 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
11 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಯಾವತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಂದ್ರೆ ಬೆಳಕರಿಯೋಗ್ ಮುಂಚೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ, ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸಂಸದನಾದಾಗ 2009ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ಬಜೆಟ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಸಿಲಿಂಡರ್ 10 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ತಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2014ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಏನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ 9 ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ, ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2014ರಲ್ಲಿ 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ರು. ಈ 130 ಕೋಟಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಕೋಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ 48 ಕೋಟಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ 48 ಕೋಟಿ ಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಹೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು PM ಸ್ವನಿಧಿ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ₹1 ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ 15 ಪೈಸಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ₹1 ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ₹1 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅವರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 3 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ₹6,000 ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಏನೊಂದು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಭಾರತ ದೇಶದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೋದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆಯೋ ಇದು ಸುಮಾರು 180 ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 102 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ 220 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂತಹ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳು, ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ 2 ಕೋಟಿ 2.40 ಲಕ್ಷ 2,40,000 ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನಿವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ UPA ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇವಲ 835 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಜಿ ಅವರು 7,561 ಕೋಟಿಯನ್ನು 9 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು UPA ಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ತೋ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 56 ಅಮೃತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತವನಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು. ಇವತ್ತು 56 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ MP ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ MP ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಒಬ್ಬ MP
ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೂಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇವತ್ತು ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆ, ಇವತ್ತು ಸಬರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು 40 ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಕನಸು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ 18,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಈ ಸಬರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹದ್ದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಾಯ್ತು ಸರ್. ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ 1350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 5,300 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಾಗಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ 157 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಏನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆಯೋ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಜೊತೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ 4 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳು 2014 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 2 ಟೈರ್ 3 ಟೈರ್ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 10,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಏನೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಟೈರ್ 3 ಟೈರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರು ವಲಸೆ ಬರೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. थैंक यू. श्रीमती काकोली घोष दस्तिका जी. Thank you, Honorable Chairman, sir. Please. I also thank All India Trinamool Congress for allowing me to speak today, and I seek your intervention and protection from the heckling that has been going on right from yesterday. I have been watching whenever the opposition speaks, there is heckling going on from the treasury benches. So I seek your indulgence for 10 minutes, not more than that. As I oppose this totally opportunistic and anti-people budget. Sir, this budget comes with its Saptarshi value system, including inclusive development reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential green growth, youth power and financial sector. This seems a lot of lofty claims without any substance in it. Strangely, not one sentence has been given by the Honorable Finance Minister, herself a lady, encouraging proposals for the women of the country. Except the Deen Dayal Atmodaya Yojana National Rural Livelihood Mission, even the self-help groups are actually organized by the state governments, not by the central government. Besides the mundane, one would have expected out-of-the-box schemes for emancipation and economic empowerment of women, including the urban poor student. And this actually regrettably neglects 50% of the population, the Adhi Avadi, leaving them outside the effective workforce in nation building. So this budget cannot be termed inclusive, nor can it be termed Sabka Saath, Sabka Vikas. In contrast, it is prudent to draw the attention to schemes like Kanya Shri, Rupa Shri, Lakshmi Bhandar, conceptualized and implemented
by Honorable Chief Minister of West Bengal, Srimati Mamata Banerjee, which is taking the women of West Bengal forward. A woman empowered is 2 generations empowered, not only her generation, even her children. So I appeal to the Honorable Finance Minister for sufficient fund allocation for reproductive health care of women, menstrual health care of women, subsidy for their education, for their educational loan, tax benefits, and for help towards entrepreneurship of women. Thousands of posts are lying vacant, sir, but there is not a word about employment for the unemployed youth. The new data governance regime, which is being talked about, if we go by the trajectory of the Digital Personal Data Protection Bill 2022, this could be another attempt to obscure data protection in the country. Considering the fact that this was actually the last budget before we go into the polls in 2024, this looks more like an appeasement towards the middle class. Of course, the tax benefit given is welcome and appreciable, but already when the bank has raised the repo rate by 25 basic points, the onus is coming onto the middle class as far as the home loan or car loan is concerned, and that is going to be higher by 6.5%. Sir, we have 3.7 crore unemployed youth in India, but not a word has been spoken about them. Let us make it clear that the mere rebate of 50,000 for the lower limit of taxable income is no relief for the middle class. It is more like a drop in the ocean. While the tax slab reduction has been announced, nothing has been said on the unemployment, on the cost of petrol and diesel, which is really telling on the purse of the middle class and the lower middle class people, and the debt the country has on it. We saw a huge cut on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in the Union budget this time. 60,000 crore, which is the lowest in many years. It's a 33% cut as compared to the revised estimates of the current fiscal. In this year's budget, food subsidy has been reduced. In the coming days, the poor will be suffering most. Meanwhile, the Bengal government provides ration free of cost at the doorstep of the poor people through the Duare Ration. So, we call our government for the people, by the people, of the people. Let this central government also be for the people, by the people, and of the people as far as the constitutional promises go. The union budget, this union budget, has promised that there is a reduction of price in the cooking gas, the LPG. At the moment, we have to pay 1,170 rupees. There has been a hike for rupees 70 and a reduction in rupees 4. So who are they trying to fool? And about the Ujjwala Yojana, it is said that so many lakhs of women were given this connection. It is a welcome move. We thought the women are going to be relieved from the smoke, but they don't have money to buy the refill of the cylinders. They could use only the first cylinder given, but now there is no money in the hand of the poor people. Hand of the poor people should be furnished by direct transfer in their accounts of funds so that the economy can take off again after the pandemics. The economy is actually dying. It should take off, so there should be more fund available to the poor people for the market to thrive. We have time and again stated that there is need to debate dismantling of the cooperative federalism, but as usual, the centre conveniently neglected the issue in this budget as well. The tax exemption is only a smokescreen to cover the government's monumental failures in addressing the increasing unemployment and inflation, along with the concerns for the poor. What has the centre done for the self-help groups, the ASHAs, the ICDS workers? They are finding it very difficult for the ends to meet. And the farmers, the minimum support price has not been spoken about. And the promise for the farmers for enhancement of their income
has not been made. And as far as the medical research possibilities are concerned, there is a proposal for research with ICMR, which is a very welcome move. But I would like to draw the attention of the Honourable Minister that there is a high burden of diabetes in the country. It can also be called that India is the diabetes capital. Diabetes